As we all know, knowledge is power, information is liberating, and education is the premise of progress in every society, in every family. So, to continue share knowledge, information, and education amongst all the members of this ICAI and all over the world, today the DAP committee has today organized this webcast to deliberate knowledge on cybersecurity. I take the pleasure to welcome you all to this webinar. As we know, rains don't come without clouds. In the same fashion, such beautiful session cannot come without the brilliant ideas of the person with great generosity, our DAP committee chairman, CACS Nanda sir. We are fortunate to have his presence today, who is a personality in himself. He is a Central Council member and presently the chairman of Internal Audit Standard Board, Digital Accounting and Assurance Board, Committee on Information Technology on South Asia Federation of Accountants, and Vice Chairman of BFSI Committee of ICAI. He is also member of Quality Review Board set up by the Government of India and convener of expert group constituted by MCA, Government of India on Investor Protection. He is also a member of SAFA on Committee on Professional Accountants in Business and Committee on Improvement in Transparency, Accountancy and Governance. He was a chairman of NIRC and has contributed as a guest speaker nationally and internationally on various topics. With this brief introduction, I request Nanda sir to give his insights to our participants. Over to you, sir. Thanks a lot, Charmi, for your wonderful introduction. A very good evening, ladies and gentlemen. We are yet back again with a great seminar, great webinar on cybersecurity. Ladies and gentlemen, all of you are aware that this profession of chartered accountancy now is touching unprecedented heights. Times have changed immensely and technology is playing a pivotal role in the professional life of every chartered accountant. I, being the chairman of Southern Asian Federation of Accountants IT Committee, have been experiencing them when I speak to other fellow chartered accountants, fellow professionals, ICWS. Now, the conceptual quality of performance and its security both have become paramount important. I would like to put across that in today's time, technology has changed the entire landscape on which people perform. Technology gives us three inherent benefits. Number one, it works on the whole data. It doesn't want to go on samples. Number two, technology puts us as a parlous where there are no errors. And number three, computers don't have wives. The work is finished on time. So timelines are met. And as chartered accountants, as professionals, we need to deep dive and bring out the pearls of technology to see that our clients, stakeholders, even regulators and government is totally benefited by our initiatives. I will not speak much. I'm sitting in an office in Amritsar, my friend Kaushik Dhawan's office in Amritsar, and I have two of the past chairmen with me. Mr. Jatinder Bansal is the chairman, Mr. Iqbal Singh Grover, and me, the host of the day, Mr. Kaushik Dhawan. So I will not speak much, but I'm totally honored and impressed to be a part of this great movement, the movement to train people. Two things I will say, and then I would conclude. The first thing, you're all aware that forensic standards have been made compulsory for all assignments after 1st of July 2023 by chartered accountants. We have a nice implementation guide going and giving guidance on each and every forensic standard individually. Please go through it. Second important thing, for people who do not understand technology, for people who may not be much conversant with technology, we have a very ambitious program, Technology for Non-Technology Chartered Account. Technology for non-technology compliant people. You could always go and have a look into the program and attend it, because we're doing it on a large scale with various branches and even online. So, ladies and gentlemen, looking forward to your deriving value out of this seminar, wishing this webinar all success and great luck to both the speakers, Dr. Rakshit Tandon, who himself is a brand, and Sri Tarun Manchanda, who again has been contributing a lot
for the institute. Charmi, your presentations as always are very good. And I want to compliment C. Amit Gupta, who has been constantly engaged in ensuring that the board touches the unprecedented heights. Not speaking much, I give the dice back to Charmi. Charmi, the dice is all yours now. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful words for me and the whole team of our DAP committee. Your insights are always very helpful to our audience, and you always add a cherry to the cake for the sessions. As we all know that you give unwavering support and your regular reassurances have made this committee work the best. Thank you very much, sir. Moving on to our session, cybersecurity. As we all know that cybersecurity is the process to avoid the vulgar alarm for the internet. To help us to do this, we have two experts on this topic today in the seminar. First, I would like to call upon CA Rakshit Tandon, who is a cybersecurity evangelist, national cybersecurity expert, crime investor on cyber forensic and ethical hacking for various laws. He's a director and founder of Hackdev Technology Private Limited, a cyber consultant for CID Haryana Police, member of Indian Police Foundation, and a visiting faculty for Central Government and State Government Police Academy. With this brief introduction, we are very fortunate that Dr. Rakshit has given his consent to be a part of this session. So welcome you, sir, and over to you. Thank you, ma'am. Thank you so much, Amiji, and thank you, Nanda, sir, for your kind words. And thank you, C. Amit, sir, for inviting me and making me a part of this important webinar. As rightly said by Nanda, sir, also that technology is very important as of now, and cybersecurity is becoming very important. And if you heard my introduction, I have 3 decades of experience. I work as a technology specialist. And my major work has been either towards investigation or towards training people. I've been fortunate to be a part of many Start Accountant chapters. I've been invited by many forums of yours at West Bengal, at Madhya Pradesh, Rajasthan, ICI chapters. And in my own city, when I was a faculty also on your portal, and I used to train the CA students for their initial courses in computers. So I have been very closely associated. And yes, I've been working with agencies like EOW and all, where I keep getting cases of lots of financial scams which are happening. So yes, cybersecurity is important, and I'll be throwing light on some of the major threats, what we are facing, how we have to keep ourselves safe, and what all is happening in this cyber domain. So I'll be just sharing my screen and sharing some insights to give you a feel that what is happening. So just to start with, so the National Cybercrime Portal recently registered 21 lakh cases in 1 year of cybercrimes. So this starts the canvas that how vulnerable we are. And we had, this is the data from January 22 to May 23. And in this data, it tells that there were 21 lakh complaints filed online on the cybercrime portal. So if you are aware, Government of India started this portal, which is called the www.cybercrime.gov.in, and a helpline number called 1930, which is only for financial frauds. And the number in 1.5 years has gone up to 21 lakh cases. So this also rings an alarm that yes, why cybersecurity is important. And as I'm talking, just recently, 3 days back, there was a case registered where 16,000 crores was swiped from a payment gateway. Now, I'm not talking of an individual account. I'm not talking of a OTP hack. मैं ये नहीं कह रहा किसी का credit card hack हुआ. I'm not saying कि somebody got stolen your phone. I am talking here about a bank, a financial institution, which himself calls a payment gateway. And they just went to file a complaint of 25 crore rupees has been siphoned off. And as the investigation progressed, they came to know that the amount was not only 25 crores, but it was 16,180 crores, where the hacker easily got into their gateway and swiped an amount of 16,180 crores. So now gateways are there, applications are there, websites are there, businesses are going online. Our digital dependency is so high. I still remember that एक दिन पहले जो होता है ना CA का कौन सा 31st March,
उससे एक दो दिन पहले, because as I mentioned, I have been invited to so many CA forums. One of my CA colleague called me saying that, Mr. Tandon, I heard you in so and so conference of the chartered accountant, and I need your urgent help. And I said, what happened? Well, all my computers in my office are locked. I run a very big firm. I have so many odd clients, and none of the computers are opening. What exactly has happened? Bole, there is a message on my screen which says that all your computers are locked, all my data is encrypted, and the hacker is demanding around 50 crores as a ransom in Bitcoin. And he's saying that if I don't pay him Bitcoin, he will expose all my data and delete. And my concern is that this data, it belongs to all my top clients. It contains their financial records, it contains their balance sheet. And my problem is that after 2 days, I have to close their account files and file their returns and blah, blah, blah. और मेरे पास कुछ नहीं है. So I asked him, do you have a backup? बोले, yes, I do have a backup. तो मेरी जान में जान आई. मैंने, where is the backup? बोले, sir, on the same hard drive in the D drive. So I hope with this message, I show a very strong message that whether you are very good in your field as a chartered accountant, but if you are having a technology in front of you, you are using softwares and third-party softwares for business accounting and auditing and all that. So similarly, you have to have good knowledge of cyber security, and cyber security cannot be reactive. It has to be proactive. बहुत कर लिया कि साहब जब दरवाजा टूटेगा तब कैमरा लगाएंगे, ये हमने बहुत कर लिया. साइबर सिक्योरिटी में ये रिस्क नहीं ले सकते. मैं आपको एक छोटा सा घटना बताता हूँ. दिस हल्दीराम, आपने नाम सुना होगा, a very big group in Noida. Recently they were hit by a virus called ransomware, and the hacker was demanding a ransom of $7.5 lakh. The same went wrong with AIIMS. All India Medical Institute के 15 servers were down, and the hacker was demanding 200 crores in ransom. And the same happened to a private college group of 8 colleges in Ghaziabad. All the 8 colleges' data was hacked by a ransomware virus, and the hacker was demanding a small ransom of $1 million. And the poor college said that, sir, all the data is in computers. I don't even know मेरे यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं. I don't even know how much fees is being deposited. Everything is online. So I think these are the focusing points why cybersecurity is important today. Whether it's your data, whether it's your infrastructure, everything has to have कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी. जैसे आपके सीए में ऑडिटिंग होती है ना, आप लोग बैलेंस शीट्स और ये सब ऑडिट करते हो, बैंक्स ऑडिट करते हो. हमारे साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, जिसे हम वीएपीटी कहते हैं. अब जब चूंकि बिजनेसेस आर ऑनलाइन, मतलब आप सोचो एक कंपनी है, आपने नाम भी सुना होगा, ओएनजीसी. ओएनजीसी के साथ एक छोटा सा अटैक हुआ विच इज कॉल्ड MIM. आपकी ईमेल हैक हो गई. वी कॉल इट मैन इन द मिडिल अटैक. इनको 197 करोड़ की पेमेंट लेनी थी फ्रॉम अ पार्टी इन सऊदी अरब, एंड दे हैव सेंट अ ईमेल फ्रॉम देयर ऑफिशियल आईडी व्हिच वाज something like this, patel_dv@ongc.co.in. God knows what happened. The hacker changed that email to patel_dv@ognc.co.in. अच्छा, हम लोगों की आदत है, मेरे पास भी 10 मेल आ चुकी हैं आज सुबह से. शुभम की मेल आई फॉर द मीटिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो हम लोगों की आदत है, हम अपने इनबॉक्स के अंदर हम सिर्फ वो चेक करते हैं, डिस्प्ले नेम, मेल फ्रॉम शुभम ICAI, मेल फ्रॉम रक्षित टंडन. वी नेवर लुक एट द ईमेल एड्रेस इनसाइड. और हैकर को मेरी सारी ईमेल्स पता है. वी कॉल इट MIM, मैन इन द मिडिल अटैक. ये एक छोटे से छोटे मैलवेयर से आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है व्हेन यू क्लिक ऑन सम फेक लिंक और यू डाउनलोड सम फेक फाइल. अब आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क पे कनेक्टेड है. आपके एक गलत एम्प्लॉय ने एक लिंक को क्लिक कर दिया एंड द जॉब इज डन. Humanware is the weakest link in cyber security, and that is what I focus on. VAPT आप सिस्टम का कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का कर सकते हो. VAPT को कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्टिंग. ठीक है साहब, मैं इसका पूरा वो कर सकता हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का VAPT, कि भाई उसमें कोई बग तो नहीं है. और पेन टेस्टिंग कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग. मैं उसके पूरे सर्वर,
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स, सबका कर दूंगा। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन वेयर? इसके लिए होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी एचआर ऑडिट होना बहुत जरूरी है। आप कौन सी मेल को क्लिक कर रहे हो? पीपल दे डू ऑल लॉट ऑफ ई फाइलिंग, जीएसटी ऑनलाइन फाइलिंग। अभी मैंने एक बहुत बड़ा जीएसटी का विजिलेंस केस किया है, पता नहीं कितने हजारों करोड़ का था वो। अब उसमें लोग लूप होल्स निकाल रहे हैं। एक सीए साहब का आईडी पासवर्ड चेंज वो कर लिया किसी ने, हैक। अच्छा, हम लोगों की गलतियां भी बहुत हैं, साइबर हाइजीन हमारी बहुत खराब है। एक एक सीए के एक ही आईडी से उसके 15 क्लाइंट के जीएसटी बन रहे हैं साहब। एक ही ईमेल डाल रखी है, एक ही फोन नंबर डाल रखा है, उसी पे ओटीपी आ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी वल्नरेबिलिटीज हमने खुद क्रिएट कर दी हैं। अब वो बेचारा सीए मेरे पास आके कह रहा है कि मेरे पास एक पुलिस का नोटिस आया है कि तुमने ये 2 फर्जी कंपनियां बना के इसमें जीएसटी फ्रॉड किया है। और वो कंपनियां हैं जो मेरे ही क्लाइंट्स की हैं, जिनको हमने 2 साल से उन्होंने कोई रिटर्न ही नहीं भरा है। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट डूइंग सेल्स, उनका कोविड में धंधा बंद हो गया, दे हैव नॉट इशूड एनी बिल। और उन 2 कंपनियों में लाखों का जीएसटी का वो आ गया है। So now, when I try to understand what happened, I saw that they were running all their clients on a particular email. That email was shared invariably in the department. So I don't think you understand how hackers work today. Whether it is your digital signature or whether it is these GST or income tax filing, cyber hygiene has to be your culture now. And if you don't make it your culture in your organization, साइबर सिक्योरिटी इज नॉकिंग द डोर। और ये कहना नहीं साहब मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो साहब जब फ्रॉड होता है ना, तो अभी एक हमारे पास एफआईआर आई इन गुरुग्राम। IT engineer, he lost 42 lakh rupees. He works in a software company. He got trapped in a scam of online income, this crypto mining और पता नहीं क्या क्या। And listen, he's a software engineer. He works in an IT company. And he lost only 42 lakh rupees. तो ये कहना कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। ये देखिए पुणे के अंदर मेरे एक इंजीनियर के 57 लाख रुपए चले गए इन एन ऑनलाइन स्कैम। सो माय डियर मेंबर्स हु आर लिसनिंग टू मी, make cyber security a culture. This is a very important month also. The government celebrates it as a National Cyber Security Awareness Month. And you have hosted this webinar at a very, very, very important and a crucial time. So today, your humanware audit, my software, hardware hardening is very important when you go online. अभी ये 16,000 करोड़ वाला हुआ है, इससे पहले 17,000 7,000 करोड़ का भी एक फ्रॉड आया है, बैंक के सारे पैसे गायब हो गए। और सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो एडवाइजरी शुरू कर दी है। अभी 2 दिन पहले की ये एडवाइजरी है, कुछ घंटे पहले की। This advisory was issued by Government of India on 11th October 2023. And the high risk warning says that if you guys are using Google Chrome, there is a high risk warning. Your Google should be updated immediately. And this warning is designated on 11th October 2023. अब मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूं and you can check on the screen कि मेरा Google Chrome क्या कहता है। ये देखिए, my Google Chrome is running on the latest version. It is saying your Google is up to date. I am using 118.0.5993.70 and my Google Chrome is totally updated. थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने एप्पल वालों को वार्निंग दी। ये देखिए, इट वॉज अगेन अ हाई सिवियरिटी वार्निंग। अब तुम अपने ऑफिस में मैकबुक यूज करते हो, तुम लोग अपने ऑफिस में आईफोन्स यूज करते हो, एंड गवर्नमेंट ने 25 सितंबर को ये वार्निंग दी है। और मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर इस वेबिनार को 200 लोग सुन रहे हैं तो शायद सिर्फ 5% को इसके बारे में पता होगा और उन्होंने खैर कोई एक्शन नहीं लिया होगा। जबकि भारत सरकार ने जब ये वार्निंग दी तो उन्होंने लिख के दिया कि इफ यू हैव एप्पल iOS वर्जन प्रायर टू 16.7 अपडेट, इफ यू हैव एप्पल मैक मॉन्टेरी अपडेट, इफ यू हैव एप्पल वॉच वर्जन प्रायर टू 9.6 अपडेट। नाउ व्हाट डज दिस अपडेट मीन्स? ये अपडेट्स क्या होते हैं, हमारी सिंपल भाषा में बताऊं, दीज आर पैचेस। हमारे कोड में जो लूप होल्स रह जाते हैं, जिनको हैकर एक्सप्लॉइट कर लेता है किसी भी तरीके से, हम उसको इन अपडेट्स के थ्रू पैच करते हैं। सो व्हाट डज दिस मीन?
it's a very vital exercise of cyber hygiene that I keep patching my devices, I keep patching my operating systems, and I keep patching my applications, apps. So whether you have a Play Store, App Store, Microsoft Store, Windows, and always use genuine OS. अब मैंने कई जगह देखा है साहब, हम लोग अपने काम के अंदर पायरेटेड MS ऑफिस और पायरेटेड विंडोज यूज करते हैं. यार अब मतलब सीधी सी बात है कि मेरी गाड़ी का ड्राइवर एक टेररिस्ट है और मेरा बॉडीगार्ड एक टेररिस्ट है, तो भाई उस गाड़ी में मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूं? सो हु ड्राइव्स माय कंप्यूटर? द OS ड्राइव्स माय कंप्यूटर. हु इज माय सिक्योरिटी गार्ड? एंटीवायरसेस आर माय सिक्योरिटी गार्ड. और ये दोनों कौन है? वो नेहरू प्लेस से सीडी लाए थे 30 रुपए की, उसमें दोनों मिल गए आपको. तो आई एम सॉरी, दैट इज नॉट साइबर सिक्योरिटी. सो टुडे building up a good cyber hygiene for an organization is important. Protecting yourself from threats like ransomware and threats like data breach. Now listen, I know chartered accountants, you must be knowing it. Government of India has come out with a data protection bill, and this bill has been made a law now. And as per the law, if there is a data breach reported in an organization, they can be fined up to 250 crores. तो अब ये मजाक नहीं है कि हम लोग ने ऑनलाइन सेटअप बना लिया, एक 50,000 कस्टमर्स का डेटा अपने कंप्यूटर में रख लिया एंड दैट डेटा इज कॉम्प्रोमाइज्ड. ये खबरें तो मुझे लगता है आप लोगों को याद होंगी, थोड़े साल पहले ही आई थी वाली. तो जोमेटो के यहाँ हैकिंग हुई. So Zomato is a very popular mobile application. Everybody is using it in my country for ordering food online. And Zomato suffered a security breach. 17 million user data was stolen. And the data contained your email address and hashed passwords. उसके थोड़े दिन बाद एक खबर आती है, बिग बास्केट. A big basket faced a data breach. 2 crore data was stolen and this data was again put on dark web. फिर उसके थोड़े दिन बाद खबर आती है, एयर इंडिया, बहुत पॉपुलर एयरलाइन है, on May 21, Air India got subjected to an attack. 4.5 million customer, including passport, credit card, date of birth, was stolen. My dear members, data today is being used by hacker as a weapon. If you don't have cyber hygiene maintained, you don't keep strong passwords, you don't have multi-factor authentication, you don't have zero trust technology, you don't have multi-factor authentications, you are subjected to hacking. Simple as that. मेरा जीमेल सिर्फ मेरे पासवर्ड से कोई नहीं खोल सकता, मैंने मल्टी फैक्टर लगा रखा है. और क्यों मेरा जीमेल इंपॉर्टेंट है? बिकॉज विद माई जीमेल माई एंड्रॉइड इज कनेक्टेड. विद माई एंड्रॉइड माई गूगल क्लाउड इज कनेक्टेड. ऑन माई क्लाउड I have my photos, contacts, drive, everything connected. So my Gmail is very important for me. It is my digital identity. Similarly goes for Apple. I have an Apple account. It is called my Apple ID. So it contains my iCloud. So my iCloud is everything. So what I do, I have multi-factor authentication. Just to show you live, suppose you get into my Gmail right now. You go to my Gmail settings, you go to my security, and what will you see? I have multi-level of authentication. Kaise? First thing I have done, I have a double verification. I call it two-factor authentication. Number 2, I have a passkey. Number 3, I use authenticator. Number 4, I use Google prompt. Number 5, I have a 2-step verification phone. Number 3, I have a recovery email. Now, that does mean, suppose you get my password. The first thing Google will say, I have sent a notification on Mr. Tandon's phone. Please accept that notification. It is called Google prompt. It will ask for an authenticator code, a 6-digit code, which is a random code and which destroys in 10 seconds. After 10 seconds, it is not valid. And third, it will ask for my biometric. I call it passkey, my retina, my thumbprint. So you have to actually do so many things to get into my Google. But if you get into my Google Cloud, I am finished. Why? Because my Google has my location saved. My Google has my 30,000 photos saved.
My Google has my Google Drive data saved. My Google has my 140 passwords saved. And my Google has my 13,000 contacts saved. And the last and not the least, it has my Google Pay profile. So if somebody gets into my cloud, I am finished. So today in cybersecurity, these are the two key factors which you cannot ignore. One is zero trust. Now, what is zero trust? मेरा लैपटॉप आपने चोरी कर लिया, कर लो, आप खोल ही नहीं सकते उसको. क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप जीरो ट्रस्ट पे है. वो अगर मैं भी चलाता हूं ना तो मुझसे भी 10 बार वेरिफिकेशन मांगता है, तब मुझे अंदर जाने देता है, क्योंकि उसे लगता है, हो सकता है रक्षित टंडन का लैपटॉप किसी ने चोरी कर लिया हो सकता है कि मैं यहां से वॉशरूम तक गया और कोई पीछे से आके मेरे सिस्टम में लॉग इन कर गया. So these are the kind of new technologies we are focusing on. We call it zero trust technologies and ID access management. We should not be lenient on this. और जो भी websites और apps हम लोग डिजाइन कराते हैं, whether it is static or whether it is e-commerce. E-commerce बहुत फैल गया है आजकल. हर आदमी छोटी छोटी चीज ऑनलाइन बेच रहा है. So, boss, you have to have a proper VAPT and audit done. And it is like an ultrasound and CAT scan of your software so that the loopholes can be plugged and the gaps can be filled and your system should not be vulnerable. Otherwise, ये जो 16,000 करोड़ वाली आपने अभी घटना देखी, it is not a small thing. The complete server was taken over and 16,000 crores was stolen from a payment gateway. और ये बताने की जरूरत नहीं है. The online money walks very fast. It walks at the speed of a light. And the current threats, what I am seeing is crypto is becoming a threat, because once the money is converted into crypto, it becomes a little difficult to track and refund and return. So all the criminals today which are doing money laundering and stuff, major cases we are seeing of crypto. And the second is your vulnerabilities of your current existing systems. So password management and breaches. This is again serious. So many breaches are happening and your passwords are stolen. And all this data is available on dark web. Now, dark web is one area where most of these crimes are happening. And now people are using new MOs, new modus operandi. AI is one of them. अभी एक छोटा सा केस आया है where this gentleman, he lost only 5 crore rupees because one of his friend using a technology called AI face swapping technology. I hope all of you have heard artificial intelligence. और AI में आपने एक चीज तो सुनी होगी कि मैं आवाज बदल के. So now if Amit Gupta, CA Amit Gupta receives a video call from Shri Nanda in his voice saying that, Amit, I'm stuck somewhere in Amritsar right now. Can you just deposit 5 lakh rupees in my account? And listen, this is not a WhatsApp message. This is not a Facebook message. It is a VC, a video call. So what will Amit ji do? I think Amit ji will definitely regard Mr. Nanda and transfer the amount. And imagine this happened with a gentleman. He lost 5 CR. So what I'm trying to say today, that you have to be very smart and alert. Don't get so digitally dependent that you start forgetting the human intelligence and you start forgetting the human relations. Everything becomes online and you trust emails. Imagine ONGC trusted the email. They did not look at the spelling of the email and they deposited what? 197 crores. And this was a pure MIM, man in the middle attack. ये रहा वो केस मैंने आपको अभी दिखाया था. 197 crores gone just because the email got changed from ONGC to OGNC. अब यहां तो ये अपराध पुराना हो गया. अब नहीं हो रहा ईमेल, अब तो सीधे वीडियो कॉल आ रहा है मेरी आवाज में. तो imagine how we are developing towards these crimes and how important it is to keep yourself safe. Then today we are also seeing a lot of crimes happening in the financial domain. And isme right from social engineering to hacking and to malwares, everything is playing a role. Now this is, for me, malware is the most scariest thing. Malware एक छोटा सा वायरस होता है जो हमारे डिवाइस का डेटा एक ट्रोजन
और रूट किट की तरह ले लेता है, मतलब इट सिट्स इन योर कंप्यूटर एंड इट सेंड्स योर डेटा। और डेटा में भी वो क्या क्या ले सकता है? फोटो, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, एसएमएस लॉग्स एंड योर कॉल लॉग्स। अब इमेजिन करो, if I have clicked on a wrong link and my system is infected with a malware. And today, I don't need to reiterate this. All of you accountants are sitting here. As individual, I don't think any one of you don't have a UPI in your phone, net banking in your phone, or your mobile banking in your phone, or these applications like Paytm, PhonePe, and Google Pay. You can't live without it. Today, right from booking a cab to taking a samosa from a thelwala or having a cutting chai from a dhaba, you have to pay via QR code. Demonetization, thanks to demonetization, cash हमारी जेब में है ही नहीं। अब उस फोन के अंदर अगर मैलवेयर आ जाए और ये डेटा हैकर के पास चला जाए, तो यू कैन इमेजिन योर सिचुएशन। सो टुडे cyber hygiene of mobile devices is again very important. All my accountants are accessing their official mail on mobiles because you travel a lot. You have so many meetings. All of you have your payment system on mobiles. All of you have your bank alerts on your mobile. All of you are having your own personal investments, SIPs, mutual funds, shares, on your device. And now on that device, you are installing an unauthorized app. So now how can I take this? So another very clear message, apps, APK files, इन सब के साथ आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। आपको अपना डिवाइस क्लीन रखना चाहिए। मैंने अभी आपको वार्निंग्स दिखाई, एंड्रॉइड अपडेट रहना चाहिए, एप्पल अपडेट रहना चाहिए, और कोई अननोन ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपने सुना होगा चाइनीज लोन ऐप, इसने ना तहलका मचा दिया हिंदुस्तान में, करोड़ों लोग मर गए। फ्रॉड, इंटिमिडेशन, सुसाइड सब हो रहा है। मतलब चाइनीज लोन ऐप ने इतनी बुरी हालत कर दिया है, कांट टेल यू। और ये अजीब अजीब नाम से आते हैं, और अब तो ईडी भी इस पे काम कर रहा है, बैंक्स कर रहे हैं, हम लोग पुलिस में कर रहे हैं, अभी ईओडब्ल्यू ने करा है। मेरे एक 22 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया जब इस चाइनीज लोन ऐप वालों ने इसको बुरी तरह थ्रेटन किया। सो नाउ दीज लोन ऐप्स की कहानी क्या है? दीज आर ऑल फेक ऐप्स। द मोमेंट यू डाउनलोड दीज ऐप, they steal all your phone data. They give this data to some fake call centers. These are called loan shark, or you can call them loan wolves. And then they give you a small loan of 2,800 to 5,000 rupees, and they demand a return of 15,000 rupees. And if you're not able to pay, they morph all your photos from your phone and send very nasty and dirty messages to your phone book. Now, your phone book has your boss number, your relatives number, your family's number, your friends, your business clients. Now, suppose Nanda ji, I am a client of Nanda ji, and now Nanda ji, such a respectable person, he receives a message from my unknown number saying Rakshit Tandon is a fraud. There is some very dirty things written about me. So how will Rakshit Tandon feel about it? And Nanda ji will ask, Rakshit ji, ये क्या है? मैंने नहीं सर, ये पता नहीं, मेरा फोन हैक हो गया है. But how will Nanda ji know that there is a big racket of loan app going on? And I can show you, हम लोगों ने ना इस लोन एप्स की एक एनालिसिस करी थी, और अब तो भारत सरकार बहुत स्ट्रांगली इसके बारे में बोल रहा है, बट फिर भी मेरे लोग फंस जाते हैं। हमने इन एप्स की जब एनालिसिस करी, तो उसमें से ये एक ऐप था मनी मोर करके। तो हमने जब इसे देखा, ये इंस्टेंट लोन देता है, हम इसकी परमिशंस देख के घबरा गए। दिस ऐप वाज हैविंग अ परमिशन टू एक्सेस ऑल माय फोटो मीडिया फाइल्स, स्टोरेज फाइल्स, कैमरा। आई हैड गिवन परमिशन टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम माय फोन एंड वीडियोस, all my Wi-Fi connection, my full network access. Now imagine you are taking a loan from this fake application on your phone, and this app has all your permissions. So imagine what will happen. So today in this financial ecosystem, you have to be very careful.
we have to be careful about the phone hygiene. Don't download. And listen, I am a chartered accountant, not a doctor. So I never prescribe a medicine. Similarly, I am a chartered accountant. If I'm not a technology specialist, how can I know the app I am downloading is good or bad? So you have to be very careful checking the reviews, checking the developer, checking the website. मेरे income tax की website का नाम था incometaxindia.gov.in. आपको पता है हैकर ने क्या बनाया? incometaxindia.gov.in. सिर्फ इसमें डॉट मिसिंग था. Nobody took care of it and they landed up on a fake website. अब तो ये हालत कर दी है. The hackers are using something called SEO. SEO में क्या करते हैं ये? एक मेरे पर्सन को ना पैन कार्ड बनवाना था. So he simply went on Google and he wrote PAN card apply. जो top 3 results all were fake. thepancard.com, panind.com, onlinepancard.in. These are all fake. और जो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है NSDL, वो बेचारा नीचे गड्ढे में 4th नंबर पे आ रहा था और ये जो एड वाले थे ये सबसे ऊपर आ रहे थे. Now a normal consumer will think that whatever comes on Google on the top is genuine. So he landed up clicking on thepancard.com. He gave all his data, he gave the money, and he was finally compromised and hacked. Similarly, even the ministry has issued a notification that there are so many fake websites. So what does this mean? Domain knowledge is very important. My website is rakshitandon.com. It is printed everywhere. But if you open rakshittondon.com, it is your mistake, not my mistake. So today, the hackers are creating these fake websites and links, and this attack is called phishing. मतलब कांटा फेंका, मछली फंस गई. And they will send you very nasty messages. And these messages, if you try to look at some of them, I have a sample of these messages. They come on your phone. Dear customer, your ICICI KYC is suspended. Click here. And the moment you click, a ditto site of your bank will open, but the URL and spelling is all wrong. Dear customer, your income tax refund has been approved. Credited shortly. Kindly verify. Click here. Again, a link. Your PAN card and Aadhaar is not linked. Again, a fake account. Your electricity bill will be disconnected. This is called clickjacking. So hackers are trying to send you a link. मैं आपको एक टेक्निक दिखाता हूं. Just see this live. मेरे पास एक मेल आई Instagram से हैकर की. The mail said, "Hello Rakshit.Tandon. We have received a complaint. Your account is infringing copyright. If you do not appeal, we will permanently delete your account. Click here on the appeal button." I just simply copied this button and I'm showing you a malware open source tool which is called virustotal.com. बड़ा simple सा tool है. It's an online website. आप इसमें फाइल को भी स्कैन कर सकते हो और लिंक को भी. मैं लिंक पे गया and I just pasted the link and said check. It gave me 6 warnings. This link is a phishing link and this link is malicious. That means if I would have clicked on this link, first my Instagram would have got hacked. Second, the malware would have got into my phone. So you received the email as a file attachment. First, I will download the file. I will choose the file. This is the file. Suppose you send me a Word file. I will select the file. I will say scan. The moment it will scan, it will give me a report. No problem found in this file, number 1. All the viruses are undetected. That means this file is totally clean. I now can open this file without any fear. But if this file would have got a malware, a ransomware, or a virus, it would have given me a warning. So now these are some tools and techniques. So suppose somebody sends you a link and you are suspicious, yaar, but let me check whether this link is safe or not. So these are the tools which can at least help you. But yes, as a part of cyber hygiene, we should educate our people not to get trapped in all these kind of links. Crypto investment, double your investment. Abhi recently, I think Himachal police has busted a racket, the Himachal cyber cell, on crypto scam. And I think it was into how much? Crores. This was the recent, 2 arrested in a multi-crore cryptocurrency scam.
on 5th of October. And these two, there were even ex-cops involved in it. So this Himachal police has arrested Corvio Coin and something like this, Himraj Thakur and all from Gujarat, blah, blah, blah. I am getting a lot of complaints on crypto crimes. And I think my CAs, it is very important because I know you do a lot of forensic accounting. So it's high time now that you understand all the digital platform, how the money is working. Plus, you should have good knowledge on blockchain and crypto. And because crypto is becoming an integral part of frauds and scams, so it is important. We should have special training programs where we should learn crypto investigations and stuff like that, because that is now going to reflect in all your investments and scams and stuff like that. So coming back to the point, these are the kind of scams we face on QR codes and UPI. So you have to be careful. No malware and viruses. Banks have done a wonderful job in security recently. जब से ये card frauds बढ़ने शुरू हुए, people was cloning your cards, people were hijacking your Wi-Fi cards. So now the banks have come up as per RBI guideline that every bank and credit and debit card has to give user the power to turn on and turn off your card. So today, with my mobile app, I can turn on and turn off my card. So all my cards are off right now. Suppose I go to a petrol pump, get my gas filled. I want to pay by credit card. I simply open my app, go to this button and turn it on. Turn it on. I give my card, the payment is done. The moment he returns, I again turn it off. My cards are safe. You can do it with a debit or a credit card. This option has been introduced as a compulsory rule by RBI since 2020. So whether you have a BOB card or SBI card, HDFC card, American Express card, you have the power to on and off your card. And I think that's one of the best securities in today's environment, where hackers are not leaving your card also. They can make a clone, they can steal your credit card number, they can do an unauthorized transaction and stuff like that. But recently we have seen some new scams. We have seen the people can steal your biometric from your property photocopies and documents. So recently we saw a lot of cases. We saw that these 5 people we arrested, they have done a scam of 1 crore with 45 people in Palwal. The Palwal police have done this great job by arresting these people. And what did they found? They were using your Aadhaar number and cloning your fingerprint from your records and withdrawing the money from your bank account. Now, this was scary. But let me give you the good news. Government of India has made it mandatory now that Aadhaar enabled payment system will only use live fingerprint. So AEPS कहते हैं इसको, Aadhaar enabled payment system, in which only 3 things are required: your bank name, Aadhaar number, and biometric. So now government has made it compulsory that this biometric has to be live. It cannot be a cloned one. It cannot be a Fevicol or a silicon something. But there are 35 lakh machines and all of them will take time to get updated. So what should I do? I should open my Aadhaar website. I should go to my Aadhaar website. I should go to Aadhaar services. We call it Aadhaar services. And you have a wonderful option here. Lock, unlock biometric. Keep your biometric locked. I will only unlock when I need it. In India, you only need a biometric verification. Either you go for a passport verification, visa verification, or you go for buying or selling a property. 99% KYC is eKYC, digital KYC, based on OTP. So unnecessarily keeping your biometric unlocked is not advisable. I am safe. My biometric is locked. If you can't open a website all the time, you can carry a mobile app which is called M-Aadhaar. This M-Aadhaar app gives you the power. In this M-Aadhaar app, you have this option called My Aadhaar. Here also from your mobile, you can lock and unlock your biometric. And I think this will always keep you safe. So this is another very important thing. And last is, I always advise people not to save your Aadhaars
and PAN cards on your photo gallery. Now, that's another very dangerous and a risky thing. You know why? All the apps today are accessing your photo gallery with your permission. And these are these nasty apps like Chinese loan apps. They are also accessing your photos. And now, if they get my PAN card and Aadhaar card, nobody better than you can explain how Aadhaar and PAN card can be misused in the country. Whether opening a mule account, a fake loan account. I have so many cases where a PAN card is being misused of a person and his civil score has gone bad just because some hacker misused his PAN card. So now I advise people that please use DigiLocker. This locker will keep all your docs safe, and wherever you need it, you can show it. You don't need to carry a physical copy of PAN card and Aadhaar card in your wallet. You don't need a license in your wallet. You just need a DigiLocker, and your DigiLocker is safe with your identity, nobody else. And the best part is it has a mask Aadhaar. It will show your Aadhaar like this. Only the 4 digits will be shown. So these are some precautions to be taken. And yes, I'll again emphasize that keep your cyber hygiene clean. All your apps should be updated. You should have a very strict cyber security policy for all the users. You should have a no pen drive policy. No data breach should happen at a CA level or at your associate level. Data has to be now your priority. You are data fiduciaries, so you have to take care of the data of you, yourself, and your clients. So your machine should be clean. You should have a good endpoint security. You must have heard the name antiviruses. I'm using another high-end word called endpoint security and firewalls. You should not share internet. Don't use shared email IDs and OTP numbers. Give client the authority of their data. I've seen cases of digital signatures being misused for masking and creating fake bogus companies and doing frauds, and then unnecessary that director is being issued a non-bailable warrant. So you have to be careful with your this company registration acts and all. And yes, these all issues of net banking, mobile banking, you have to have a very clear mandate of security. You should know how to secure your Aadhaar, your net banking, debit cards, credit cards, and God forbids if something goes wrong. Yes, you have this 1930, which is a digital protection number created by Indian government. It's a national reporting number for cybercrime. A lot of money has been saved because of this. So any fraud, immediately report on 1930. The website is cybercrime.gov.in. You can report. All your IT people should visit this website, csk.gov.in. It is called cyberswachkendra.gov.in. It will keep you updated with all the alerts, viruses, and updates. So it's a very beautiful website, cyberswachkendra, csk.gov.in. And if you lose a phone or a SIM card, immediately get your SIM card blocked. Abhi parson tarson ka case hai, when gentleman lost his phone and within 15 minutes, he lost 45,000 rupees from his bank because the SIM was misused. So today's SIM is not a SIM, bhaiya. Phone is not a phone. SIM is my digital identity. Google का पासवर्ड भूल गया, सिम कार्ड. बैंक में घुसना है, सिम कार्ड. Transaction, OTP. UPI, OTP. Forgot my password, OTP. FD mature, OTP. Everything is restricted to your SIM. And आप फोन खो गया हो, बड़े लाइटली ले रहे हो सिम कार्ड. अरे अब तो रात को चोरी हुआ है, कल सुबह जाएंगे पुलिस में कंप्लेंट कराएंगे. So this will not work now. एक second, I'm sorry you're getting this call. Just hold on. So police officer, I have to take this. So I'm sorry. Just I'll mute for a second. Just give me a second. Yes, sorry.
So this is there. SIM should be blocked. And plus, government has again started a portal called sancharsathi.gov.in. Now, this is a very interesting portal. Let me show you live. Sanchar Sathi से आप क्या कर सकते हो? First, you can block your stolen phone. That is the best part. You can see 9 lakh phones have been blocked and 3,68,000 have been traced. So you can block your phone. And the second thing is you can know your mobile connections. आपके नाम में कितने सिम कार्ड चल रहे हैं ये आप चेक कर सकते हो. तो अगर कल को कोई आपको याद ही नहीं है, कोई पुराना नंबर आपने इशू करा रखा है और कोई उसका मिसयूज ना कर ले, so you can at least, it's a citizen centric service started by DOT and Government of India to prevent frauds. So you can track your lost phone and you can know your mobile connections. So this is something very important. And CSK, as I mentioned, is very, very important for all your IT associated people. Why? It will give you the alerts. Now look at the alerts. There is a latest ransomware called No Escape ransomware, Lua Dream malware, Monty ransomware. You will find all the latest threats. और बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं इसका इन्फेक्शन मैकेनिज्म क्या है, ये इनक्रिप्ट कैसे करता है, आपके कंप्यूटर में कहाँ जाके बैठता है, कैसी स्क्रीन आती है, इससे बचना कैसे है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है. तो मतलब आई वांट माय आईटी टीम, whoever is associated with IT, to at least refer these websites on time to time basis. So accountants, thank you so much for listening. I'll rest my voice here. I'll love to engage and take some questions if you have for me before I leave. I am sorry I have to rush because I have another commitment. There's another Government of India webinar which is waiting for me. And because I have committed to Nandaji, that time I did not saw my calendar. So I said, no, I'll be there. And abhi 3 to 6, I was with Jito Nasik. So since, and in the morning, I was with Ministry of Women and Child Development. So it was been a back-to-back sessions and training. So I'm so sorry. I'll have to rush. Though I knew it was 1.5 hour engagement, but I'm so sorry. I had requested Shubham that I'll have to leave in 1 hour. So if any questions for me, I'd love to take. Yeah. Sir, one question we can take up is that software updates make that program heavy, which affects performance of our devices. So what is your opinion? So these are those kind of myths जो हम अपनी लाइफ में भी सुनते थे कि अमरूद खाने के बाद पानी मत पीना नहीं तो खांसी हो जाएगी, और बिल्ली रास्ता काट गई तो वहां से मत जाना भाई साहब, तुम्हारा काम नहीं होगा. I don't know how and how many people have created these kind of myths. Never. A software update will never affect the performance of a device. Number one, this is wrong. Number two, you have a problem in the memory orientation of your device. So there are commands like defragmenter. There are commands given in your system called defragmenter, which is a kind of memory orientation which should be done on a device which is heavily used. Number two, मैंने ये भी सुना है कई लोगों से एंटीवायरस डालने से कंप्यूटर स्लो हो जाता है. नहीं नहीं, रॉन्ग है ये. अगर आपका मेमोरी एलोकेशन प्रॉपर है तो कोई नुकसान नहीं होता है. अपडेट से कभी भी डेटा नहीं भरता है. आपका डेटा भरता है यूजलेस व्हाट्सएप से और यूजलेस वीडियोस जो आप अपने ड्राइव में सेव कर लेते हो. So it is always advisable to buy a cloud space and keep your device memory free for all these updates. So today on my device, I have a suppose 128 GB memory. I am only using 28 GB there. 100 GB is free. Now what I do, I take in 2 terabyte of cloud space. All my photos, all my videos and all my content and drive, it goes on cloud. So if your memory allocation is clear and good, no updates will affect the performance of the device. Wonderful, sir. This was a great marathon where we learned that in our personal life, we were making so many mistakes that would give rise to such great theft or etc. Thank you so much, sir. Your time is as precious as gold, and thank you, sir, for sparing your valuable times with our participants. Thank you all. Time from your shed. Thank you. Thank you all the members. Thank you, Nanda Saab. Thank you, Amit ji. And thank you, Tarun ji. And namaskar, all of you. Jai Hind. Thank you. Jai Hind.
So with this, we move ahead in our second session of our webinar. We have with us second speaker, Tarun Manchanda. He is an ERP implementation and control framework and he has a deep understanding of technological risk. He's an investment banking, regulatory payments, and anti-money laundering expert. He also have a result-oriented information technology audit and risk professional with 25 years of experience in financial service industry, exceptional organizational and auditing skills with a strong background in data analysis. With this brief introduction, I welcome you, sir, and now stage is all over to you. Thank you, Charmi. I hope everybody is able to hear me and also is able to see my screen. No, sir, we cannot see your screen, but we can hear you. Just a second. Let me share it. Can we see it now? Yes, sir, we can see. Yeah. So once again, Charmi, and I'd like to thank you for introducing me. And also, it's been an extremely wonderful session by Mr. Tandon. Itself was really, really insightful and, keeping us updated about the most recent even updates being done by the government to safeguard us and us. So I think I just quickly changed my theme and said he was very correct in saying that obviously, my whole site was also in the same lines of phishing and everything. But सबसे ज़रूरी था कि we don't want our chartered accountant members to become a bait itself. So the whole point is we don't want to take the bait and want to make sure we have a proper cyber hygiene. I'm going to talk about all the same things that Mr. Tandon has spoken about one by one and look into all those ransomware attacks. And more importantly, also talk about a few things in the same spirit of cyber hygiene, how it exactly happened, take it from there. So in the spirit of the same aspect, let me share my whole screen again. In fact, I'll take it just जहाँ पे रक्षित sir ने discuss किया. I think he's given so much phenomenal insight into the specific aspects. Let me share my whole window and I'll showcase you. So along with the multi-session aspect, one thing which has to be also looked in the cyber hygiene is once we go into our same account, so this is my account, we go into the manage. Rakshit sir clearly explained that obviously we need to safeguard our specific personal information and our privacy, make sure we have a multi-factor authenticity which looks into it. In the same spirit of things, if we go out there and look in the data and privacy side, there are also a very critical side कि हम लोग क्या करते हैं आजकल आप कोई भी और थर्ड पार्टी वेबसाइट भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, that is also being done with the help of your Google account. It's a very common feature कि अगर आपने Adobe में जाना है, you want to go to Truecaller if you look into that. So if I say, so once you type into those, the only way to access those sites is using your specific Google account itself. So once you go into that specific side of things, I'll just showcase this. So what need to be done is, let me see if, let's see. So in the same size of data and privacy, if you go down, it will also let me know कि मेरी कौन सी third party apps and services जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं. And once you go into that, one thing which has to be very clearly looked into this is कि आपने किस साइट को क्या access दे रखा है. So there are sites which are from Google, so it's very safeguarded. But just look into this part, it will also let me know कि जैसे I went to my account, so कौन सी sites में आप sign in कर पाते हैं. So these are all the sites where I use my specific third party to log into this thing. But the most important part जो आप सबको कहीं ना कहीं देखना है वो है कि आपने किस साइट्स को अपना Gmail access, Drive access, Calendar access और contacts. If I just click on my Drive, which contains all my details and everything into that, so you can clearly say there are two things which I have given right to it. One is the Adobe, I'm okay with that because whatever those specs are, I'm feeling, I have a privileged access password on that. But also my WhatsApp Messenger, whatever backup I take, I use it using the Google Drive. So I'm okay with both this as you are okay. But if you find anything which is definitely not onto the task of things,
you'll find it a number of times, जब भी आप कभी जाते हैं, start using your day-to-day aspects, what you're going to see is something called as these third-party access sites. So also make sure जब आप hygiene में will look into along with all the number of steps which Mr. Tandon already explained. I'll not reiterate those, but those are really effective. उनका भी आप पूरा ध्यान रखिए. But on top of it, just make sure you also look into this third-party apps and services, because that's the most common way of, you have a federated access. आपका जैसे ही Google name और password किसी को पता चलता है, it not just compromises your Google, but also compromises the third-party apps. तो इसका भी आप please ध्यान रखिएगा. And the whole point out here is, when you look into that, and we're talking about this, we ourselves don't need to become the bait. And once you are safe, you'll also make sure ना सिर्फ आपकी practice safe रहेगी, but even the practice which we have for our clients, and our clients will also need to be informed about these things. These are some small tips which will not help your own organization and your own offices, but even for clients. So I think it plays a very crucial role just to make sure you have a very clear and ensure the cyber hygiene itself. So I think Mr. Tandon and you, most of you are aware, the most daring fact out here is the rise in cyber attacks, no matter where you go it, right from the places which are reported and actually identified. जितने भी cases Mr. Tandon ने refer किए, those are the cases which already came into the limelight. They became the headlines, but the numbers are very dark and constricting on the wrong side of things. So almost every 2 out of 3 organizations which have a cybersecurity framework are being attacked globally. So it's not an exception which look into those. And the most important part here is 9 and 10 were running. So basically, wherever these 2 and 3 organizations which fell to the cyber attack, 90% of them actually have an antivirus framework into the place. So having said कि ऐसा नहीं था कि उन organizations में we're talking now, not the common persons जिनके hygiene नहीं थी, they will be hampered. These are so much professional criminals कि everything has been taken into place, and even 9 out of 10 people have an up-to-date cyber security framework, which made it very difficult out there. So once again, the most pivotal part here is that cyber safety is nothing but your own safety. The hygiene is basically your own hygiene, which you have to look into and make sure pivotally understand that and take it from there. So this is the average cost of data breach industry as per the IBM security cost of data breach reports. And you can see all the industry, including financial, are amongst the top 2. And the best part out here is that for the last 12 continuous years, the top 4 have not been changed. So if you remember our earlier speaker, Mr. Tandon, was clearly explaining, even people in the technology industry are in the top 5 itself. It's not if you feel like nahi, hum log technology se hai, we are safeguarded, hamare pe attack nahi hoga. That's an absolutely misnomer. So right, you look into any, and mind it, this data is global, including India. So you can look into it. The healthcare, you must have heard the recent AIMS ransomware attack along with other things, and the pharmaceutical industry. Just have a look into this, and this is the cost. This is not just $10. Sorry, these are $1 million. So basically, this is the average cost of each breach which takes place, not just by the way of ransomware which you pay it out, but after the cost of the antivirus and all the framework which need to be improved once the attack has taken place. So as you can see, the top 2 are healthcare and financials, and they have been same for the last 12 years as far as the data breach is concerned, because that's where most of your PII data is concerned and everything is looked into place. So once again, nothing into this. The most weakest link, as Mr. Tandon has already explained, is the human link out here. So you could have the most state-of-the-art infrastructures and everything has been looked into this. The most easiest way to penetrate is by simple knock on your door. That is by entering through the main door rather than finding a hardware or breaking into the other aspect of the things. So once again, social engineering improves the hackers' odds tremendously as far as their working is concerned. How we look into it? Just have a look into that part. So as rightly said, again, same statistics, Mr. clearly explained that, और वही यहाँ पे भी आपका सामने उभर के आता है. 33% of your cyber threats triggers from your email or from your websites or from those antivirus software जो Tandon very clearly explained कि हमारी कौन सी गाड़ी जो pirated software is just like having a car where 2 of our driver and bodyguard both are terrorists. So obviously those kind of softwares which we either download quickly for our safeguarding, it has not been taken up from the
specific Google Store and App Store reputed sites nahi hai, and you want to have a quick shortcut, a kind of app which shows you live matches free of cost or anything, which makes your life easier. So those are the most common ways out, जहाँ आप खुद जाके उन websites को access करते हैं और उसका use में लेके आते हैं. And finally, not the least, but even your USB and devices which you plug in, which look into it. So these are the most predominant ways by which hackers are able to exploit the things. Along with, if you remember when we were talking in the last session also, one of the biggest drawbacks is the your patch management itself. So it means if your softwares are not being updated on the timely basis, or for the matter of fact, any software which has the company has said we're not going to provide maintenance on this, they become a huge vulnerability risk when it's coming into the play. So these are the kind of things which has to be looked into and taken into account. Once again, phishing, we'll take a quick example and look into those side of things. So as we all know, primarily there are multiple kind of phishings, and it's just becoming sophisticated day by day. Mass phishing, where everybody is being given the same kind of email, and in every phishing attack, whether it's done, and you know what, even the smartest of the people, he was explaining technology when Mr. Tandon clearly explained, because he works very closely with the law authorities, nothing better than him. We're a technology guy who knew all these risks and everything. He just went into the crypto mining and was able to lured into a kind of job which pays him money. So it would have been nothing but starting out with a mass phishing email where he would have been given a, or either it could be a spear phishing too, but it has to be either one of those where they're giving them an opportunity, okay, come work for us and we'll also pay you money and you need not worry around this thing. Another factor which is also going on in the cybercrime things are that they kind of lure and build your trust. So there have been a number of sites which we work with, globally with various other regulators is primarily in UK side. So this crypto site, when you look at the trading which takes place, is actually a kind of a dummy simulated software. So once you open those software account, it will just open like a normal trading account. They will have some money on, so and they will also pass on some money. They'll ask you to deposit 500 or 1,000 rupees. आप उस पर trade करेंगे, and that algo would give you back 2,000 the very next day. So these are the ways you build your trust by giving, involving first 1,000 rupees up to 5,000, and then they give you an opportunity. Okay, now you're in a jackpot league. आप अगला amount 1 lakh या 10 lakh invest कीजिए, and we will start working more. So when you look at it, they'll lure you into those phishing aspects and build trust onto it, and then take you for a kill. The most recent one you would have also seen in the mass phishing thing has happened also yesterday itself, was the DMK MP, prior MP, Karunanidhi, his wife account was being hacked, and obviously almost 1 lakh rupees has been taken out from there. The reason out there, he was aware of all the security awareness, but the reason he was able to access and hacking took place was it was a joint account, and the phishing malware actually came not on his device, but actually came on the device of her spouse itself. And obviously they installed the malware which is called as SpyFix. They're working into it, and most likely this thing is still going on, but that's the most likely spec which has been given out. That has been based on a spyware was installed on the spouse website, and obviously the OTP link was directly accessed rather than being in, and also deleted at the same time. So we'll look into that part, how what those spy sprays are. We'll look into it soon enough and take it from there itself. So once again, mass phishing is something which is very generic. As you all know, you must have seen it. Your account has been suspended. Just look into it right away. Agar aap abhi nahi aaye, things would be either closed. You have to look and pay attention to it. So obviously, when you click onto it, there are two ways. Either it will go to a website which just looks like Netflix, or it could also be a malware dump where you have your aspects and you look into the specific sides of a malware or a kind of spyware which get installed on your system and stays behind in the system to either lead a new attack or a malware or a kind of Trojan or a ransomware also later on, as far as timing is concerned. So this could be mass phishing. And when it comes to the spear phishing, once again, we've seen a number of examples in the day today, and I'll not repeat on those, is finding a very specific target. Your name, your refund is due, and obviously it'll ask you to submit the request by clicking on some links. So obviously, rightly said, once you open the link, whether, I think Tandon sir gave a very nice example where we asked, they involved Rakshit and Shubham, everybody, by asking, and even Mr. Amit Gupta, when Nanda sir calls using his AI call,
and ask him to submit some money or some very critical document which could have some PIA details, I think all the office members would be more than happily either looking into it and making sure those details are being provided, whether those are PIA driven or it could be money for the matter of fact. So that those could be done. So those are, again, done in a way. So always be skeptical. That's what audit profession also teaches us. So by default, when we talk about our audit profession and being a chartered accountant, आप लोग by default skeptic रहते हैं. You always provide your judgment factors. Only thing is, we have to also apply the same thing in the cyber world for a cyber hygiene. And once again, I know last 1.5 hour and one session which we are having on, we are trying to say you all the way, सब खतरनाक बातें आपको बताई जा रही हैं, ऐसा कीजिए, ऐसा मत करिए, इस चीज पे बड़ा खतरा हो सकता है. बट खतरा बताने का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें. आपको सिर्फ ये बताया, जैसे अगर गाड़ी भी चलाते हैं तो आपके लिए वो इतनी खतरनाक होती है. But we just make you aware these are the risks. And once you're driving on the road, be very specifically clear and be absolutely cognizant कि आपने किन चीजों से बच के चलना है. तो सेम फैक्टर आपका यहाँ पे भी है. ये सारे फिशिंग अटैक्स और जिन भी कंट्रोल्स के बारे में आप बता रहे हैं, इट्स नॉट कि you don't stop using those things, but in fact you start using it in a more hygienic manner, which will be useful to yourself. And obviously, if you carry on the same legacy towards your client also, they will also appreciate the great value addition aspects, not just from business point of view, but even from your day-to-day tasks, your clients also. So once again, quick question to everybody: what do these three brands? I know they're American. One common theme is these are American brands. What's the most common thing you have in common? If somebody wants to give it in a chat or anything, I'll be happy. I'll give a minute. What is the most common thing in these brands, apart from being all three American? Okay. So yeah, apart from being American in technology, these are the three most spoofed brands in phishing attacks, because these are the things either you'll be on a Apple devices, your Amazon services, and Microsoft you use day in day and out. So those emails are the ones which are being widely used and deployed in those aspects. So once again, phishing attacks, as I told you, be always skeptical when it comes to anything comes into your place. So just going to quick aspects. And I know, Charmi, I don't know whether we can do a quick where people can ask and look into this thing and give an answer. So anything, which one you would say is the phishing attack and not? I'll just give a minute. If everybody can look into it and let me know, I'll have a quick take and aspect whether it's a phishing attack or not. Okay, so I'll just keep a watch on the answers which are flashing. Okay. So out of these three, I'll say 1, 2, and 3, so that everybody knows which one is one, and we'll look into it. Which one looks like a phishing attack? Obviously, I can't put the URL out here and look into those aspects. You have to read very closely. As well, being skeptical, you have to understand from where so the few things, look into alerts from the TP software, which is talking about your TP software account, which you might have, some reset codes, a masked email. Things look in the right direction. So you have to be always skeptical, and your hygiene has to be on top of it. Similarly, some bonus points is asking you to your bonus points are expiring. It's not pressuring you to go and do something. It's saying you can shop now, they might expire soon, no harm done, and you'll look into those aspects. But let's look into this specific side of things. This Westwind Bank looks into balance exceeded, your request was declined, you have maximum available balance, please sign in into your account, give your credentials, and initiate a transaction of account, please click here immediately. So when you look into all these things, which is giving you kind of, shows on aspects, you go to your day-to-day life, not many stern messages come into the play as far as working is concerned. So anybody, which looks into those aspects, these two still look in the right direction, but this is the one which more like a phishing aspect. As I told you, some poor grammar, poor spelling, and urgency. Now, one thing which is also happening nowadays is, thanks to AI and machine learning, your Bard and other AI tools are also helping you write down wonderful, along with code. It's not just making you write new code software, they're also making you write very professional driven phishing mails. So no doubt, next few weeks in the line,
आपकी where you are able to identify those things very clearly. But this would soon be happening. It will be also looking even more genuine, and it will be more. But again, the safeguard there is, be always skeptical. If you even receive something with an urgency, never click on the links in those mails or in the messages. If you have a kind of even an income tax refund, which is okay, you should directly go to the website where exactly those links are being said, rather than going into those links itself. So one of the most crucial hygiene thing which you can all do is कि आप rather than कि इसको आप उसी लिंक से ओपन करके दें, आप उस वेबसाइट पे चले जाइए जहां से आपको इश्यूज आए हैं और उसके बाद उसको वर्क करके चले. Same again happens. Some more examples of phishing. We'll share the presentation after the call. You can have a look into this. So once again, when you look into 4 aspects, if anything has some poor spellings, bad formatting of the email, they might look, kind of in sync on those things. So poor punctuations, old sign off from 2016. So these are the kind of things which gives away whether it's a phishing attack or not, whether it's in your email or other aspects. And the genuine ones would not pressurize you to do anything, would give you some information and that's it. And, let you know whether you want to track or no. There's no implications or something that results into those parts. So that's how things have to be looked into. So once again, this is again a TV licensing aspects which took place for our clients. They clicked on it, and obviously all the personal records were being hacked. Now, one thing which you might have seen in this, obviously after Data Privacy Act, which has been come into play, now the data owners have a fiduciary duty towards the persons whose data they are looking into. But these laws actually came and derived from the UK side of the things, where the responsibility lied, with the GDPR and the EU regulations, which we make sure कि आपके data में अगर कभी भी safeguard जब आपका data अगर कोई lost होता है, companies also would be held responsible now for working with concern. Now, another thing which we do for clients is during the phishing season, and you should also look into those. There are sophisticated tools to look into that. We used to also do simulated phishing attacks. So these are reports which came from those top 10 phishing emails which we fall for, because these spam mails which force you to open it up is something, it's a complete bots which work into it. And these are the subjects which were highest in the rank. Some kind of task, a service number being given to you. Let's meet next week. Simple thing, car lights left on. So some fax message coming on some pages, open it up, it came from a Xerox machine, encrypted machine. Traffic citation happened. So these are kind of, top 10 where the onus was when we looked and simulated. The employees, even after having trainings, almost 40% or 18% of them open door. So just imagine अगर एक ऑफिस में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे 5 या 10 या लोग भी काम कर रहे हैं और 40% उसके अंदर अगर ये सिंपल से टास्क आपके ओपन करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर हम देखेंगे कि आपको डॉक्टर टंडन ने भी बताया था कि इवन व्हेन यू क्लिक रादर देन गोइंग टू निटी-ग्रिटी ऑफ थिंग्स, द थ्रेट इज सो लार्ज, क्योंकि फिशिंग अटैक होने का 2 चीजें होनी पॉसिबल होती हैं. या तो वो आपको ऐसी वेबसाइट पे लेके जाएगा जहां पे आप उसकी फेक या स्पूफ वेबसाइट होगी जहां पे आप खुद अपनी मर्जी से उसका अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर देते हैं. बट देयर इज अनदर malware जहां पे once you click a file download comes into play which would be kind of malware and would be clicked, and it's serious enough. अगर आपने कोई भी क्लिक किया, we'll look into one of the case studies which we'll look into later on how exactly it works and take into place. We'll take it from there. So these are kind of specific aspects which look into the best regard, a number of employees have asked to attend a mandatory harassment awareness training. Please click on this link. So point is, they are becoming very smart. So when they do the spear phishing exercises, कि मेल इतनी जनरली बनाई जाती है कि इट फील्स लाइक कि कस्टमर और द एम्प्लॉय इज डूइंग देयर टास्क. तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ऑफिस में किसी को बोलेंगे, अपने खुद सीनियर और अपने एम्प्लॉयज को मेल अगर ऐसी आए जो उन्हें बोल रहे हैं कि नहीं ये ट्रेनिंग करनी बड़ी जरूरी है, फटाफट आप इस डॉक्यूमेंट भेजिए, आई एम प्रीटी श्योर हाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आपके ऑफिस में भी लोग तैयार हो जाएंगे अगर मेल स्टर्न मैसेज से लिखी जाती है. सेम थिंग, कई बार आप गुड स्मार्टियन बनना चाहते हैं कि भाई हमारी पिक्चर बाहर हमारे पार्किंग लॉट में कार खड़ी है और उसकी हेडलाइट्स ऑन है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज जिसके लिए आपके खुद से पर्पस आता है कि आप किसी की मदद करें, ये दोनों ही फैक्टर्स के अंदर आप करते हैं और वो पिक्चर देखने के लिए जाते हैं कौन सी पिक्चर है उस कार की. ये सारे फैक्टर्स आर वेयर दैट कैन ट्रिक यू टू इवन ओपन अप दोस ईदर attachment or a link which can install a
simple malware on your systems, and your data and your hygiene would be in a jeopardy after that. So, taking to those aspects, these are not just now stop to emails. When they ask it out कि भाई आपका SMS भी आया है, मैंने कहा कि वहाँ पे वो लिंक है, वो लिंक इस केस में आप देख रहे हैं is taking you to a kind of website which looks like the same aspects, giving you all those things, but by the time you give it out, all your key and personal data is given for a DOS itself. So once again, no matter what kind of things come into play, who is asking you, चाहे वो आपके ऑफिस के हेड हों या चेयरमैन के हेड हों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं CFO को की मेल, जो टोटल प्रोटेक्ट ना हो के, जैसे थोड़ी देर पहले हमारे टंडन साहब बता रहे थे कि टोटल हैश प्रोटेक्ट से आ रही है, और मिस्टर जॉन जो वहाँ पे एक फाइनेंस ऑफिस में जनरली काम करते हैं, वो अपने CEO की एक अर्जेंट रिक्वेस्ट बनाने के लिए, कुकी पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स लेने के लिए उतनी ही जल्दी काम करेंगे, और ताकि वो अपने CFO साहब को बिल्कुल खुश और ज़्यादा नंबर्स बना पाए। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। उतना क्लियरली बताया जा रहा है कि भाई आपका वर्क हो, एंड यू आर ऑलवेज अंडर द थ्रेट। As I told you, not just you, your employees, your whole office, your team has to be always skeptic when they're opening up all these emails. सोच कर समझ कर उसके बाद ही ओपन करिए, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी आपको लगता है जरूरी है, ऑलवेज कॉल। अगर एब्रप्टली आता है, आपके रूटीन में नहीं है, कॉल दी मैनेजर, गेट इनटू द कंफर्मेशन एंड टेक इट फ्रॉम देयर रादर देन क्लिकिंग ऑन दोस ईमेल्स। क्योंकि हर ईमेल, और खासतौर से आपको पता है, अगर आपका जो क्रंच टाइम होता है, चाहे वो आपकी GST फाइलिंग की एंड डेट हो, चाहे 31 मार्च हो, वो हर समय ऐसी अर्जेंसीज आपके ऑफिस में भी नॉर्मली एवरी मंथ एंड इज अ काइंड ऑफ अर्जेंट मंथ एंड, और ऐसी मेल्स आपके बाकी सब मेल्स के साथ आएंगी, तो एम्प्लॉइज मोर देन इफेक्टिवली इन सब के ऊपर ओपन करना शुरू करें। एक बेसिक ट्रेनिंग और उस पर वर्क करना उतना इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो वंस अगेन, सबसे ज्यादा रिस्क जिसके अंदर इंपॉर्टेंस और ट्रेनिंग जरूरी है, फिशिंग ईमेल्स के बारे में। आपके पीपल्स जितने भी हो, चाहे आपका अपना स्टाफ हो, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके आप काम करते हो, या आपकी विजिटर्स हो, उन सबके साथ आप हमेशा उनको ध्यान से समझेंगे और उनके ऊपर आप स्केप्टिकल ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने UPS या किसी ने US पोस्ट ड्रेस पहनी हुई तो आप उसको ट्रस्ट कर लेंगे। You should always be skeptical and make sure take all the necessary steps to make sure the right person have entered into play. जैसे कि जीरो ट्रस्ट वाली बात हमारी मिस्टर टंडन ने भी पिछले सेशन में बताई थी। ऑलवेज हैव जीरो ट्रस्ट व्हेन इट कम्स टू पीपल बाय ईदर हैविंग देयर बायोमेट्रिक डिटेल्स और इवन देयर ID कार्ड्स एंड अदर फिजिकल एस्पेक्ट्स। सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट्स अनदर वन ऑफ देम। जैसे उन्होंने बताया कि अब आपकी भारतीय वेबसाइट बता दी, इसी तरह से आपकी ग्लोबली भी वनरेबिलिटी एनालिसिस में आपके पूरे के पूरे, जैसे आपके FBI और अदर गवर्नमेंट्स भी सर्ट के अलावा आपका सीसा एक .gov है जो US की बॉडी है इंटरनेशनल, जो जितनी भी नई नई वनरेबिलिटीज या सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट्स अगर ओपन है और इनके पैचेस नहीं आए हैं तो उसको वो पब्लिश करती रहती है, लेट देम नो द सिवियरिटी आल्सो। सो दोज आर काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव टू रेगुलरली गो, एंड ऑब्वियसली दैट द टास्क इज ऑफ द IT एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दोज स्पेसिफिक ऑफिसेस, ताकि आपकी कोई भी अगर नई ऐसी एक्सप्लॉइट इस्तेमाल हो सकता है जो आपको हिट करेगा तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं। So that becomes next of them. Insecure wireless networking, which could be having all those I'll give us another quick demo of how this wireless networking आप सिक्योर कैसे बन सकते हैं, और कोई भी unknown devices अगर आप इंस्टॉल करके अपने नेटवर्क पे चलाते हैं। So this is the kind of things which mitigate your those aspects and make sure कि everything has been working in the right direction itself. So once again, I'll just repeat, the most aspect of phishing is if somebody in the emails makes you big promises which are too good to be true, they harass you by doing something right away. अगर नहीं किया, timely नहीं दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, putting on show kind of mental harassment onto your specs. When instincts are your kind of odd, आपको लगता है कि नहीं चीजें ठीक नहीं है, और अगर कोई भी ईमेल में आपने सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है, फिशिंग का फाइनली आएगा कि यूल हिट द डिलीट बटन। तो ऑब्वियसली ऊपर में से चारों कोई भी अगर चीजें हो रही हैं तो आपको अपनी चीजों को हटाना है एंड हिट डिलीट। तो अगेन, इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज द सेंडर, ईमेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, फ्रॉम एड्रेस मैच नहीं हो रहा, कोई भी अर्जेंसी दिखा रहा है, डेस्टिनेशन URL खराब है, इंटरनल प्रोसीजर और IT इश्यूज है जिसके बारे में आपको बोला जा रहा है। एक और खास बात जो हमेशा रहती है, आपकी हर साइट के आगे HTTPS लगा होना जरूरी है, आपका सिक्योर बनाता है। तो ये आप हमेशा जो भी वेबसाइट खोले मेक श्योर उसमें हुआ।
आजकल जितने भी आपके ब्राउजर्स आते हैं उसके अंदर एस बाय डिफॉल्ट होता है, अगर नहीं होगा तो आपका ब्राउजर ही बता देगा दिस साइट इज नॉट सेफ, और आपको यू हैव टू गो ऑन योर ओन रिस्क, दोज वेब ब्राउजर्स टेक केयर ऑफ इट। एंड अगर कोई भी ईमेल आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगे, उसमें स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स हो और ग्रीटिंग सिग्नेचर जेनरिक हो या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, तो these are kind of quick checklists जो आपको साइट मिलेगी, तो you can use and leverage. Just make sure you keep yourself safeguarded on that part. Now, one quick thing before going to ransomware and those aspects is, we are always in the state of war now. So I'll just showcase you one of the aspects out here. So Kaspersky and अलग-अलग आपके जितने भी ग्लोब सर्विस देखिए. So this is a live aspects of things happening around the globe. तो आप देख सकते हैं these are all the attacks which are, so obviously rather than we had the next level of wars, World War III, when we look into World War I was run on land, World War II was done on land, air, and water. But the third level which is going to happen is not on all these things. Along with those, it's going to be in the cyberspace of things. So here it's a kind of heat map. You can clearly see, which is various organizations and countries which are being attacking on each other, how things are going. So you can see a live aspects कि यहाँ पे कैसे आपके Oracle frame में ये सब आपके open software से आता है, क्योंकि everything is based on your web servers and everything is based. You can look into these are the kind of broad spaces. चाहे US में है, China, Russia, developed nations. इंडिया भी इसके अंदर रहता है, तो ऑब्वियसली अभी इतना प्रोडक्टिवली नहीं चला, बट ऑब्वियसली यू हैव अ स्विंग, बट टॉप 5 कहीं ना कहीं आपकी इन्हीं कंट्रीज के वजह, एंड वी नो कि काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल टसल्स नाउअडेज गोइंग अक्रॉस द ग्लोब. ये मैप आपको क्लियरली दिखा रहा है कि ये सिंपल शूटिंग्स, कोई वैसे मिसाइल अटैक्स नहीं हो रहे, बट दीज आर द काइंड ऑफ साइबर अटैक्स विच आर नाउ ऑलवेज एक्टिवली टेकिंग प्लेस. Fortinet is one of the providers which clearly is showing out कि कैसे एग्जैक्टली इस समय कौन से स्पेसिफिक सर्वर पे अटैक की कोशिश हुई है, एंड ऑब्वियसली उसको ब्लॉक कर दिया गया, तो वहां पे नजर आ रहा है लो, मीडियम, और कहां से हो रहा है और किस लोकेशन से कराया जा रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग क्लियरली शोन ऑन दीज हीट मैप्स. It's a very very threatful world which look into those aspects and big group. इसी में अगर आपको याद होगा, मिस्टर टंडन also looked into the specific side of something called as dark net, correct? So I'll also quickly explain you कि डार्क नेट कितना खतरनाक है, कैसे होता है. जब भी आपका कोई साइबर अटैक होता है, उसका आपका डेटा लॉस रहता है, करेक्ट? सो व्हेन यू लुक इनटू दोस एस्पेक्ट्स, सो व्हेन यू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, व्हेन यू गो इनटू द डार्क नेट साइड ऑफ द थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, डार्क नेट, आई जस्ट राइट डाउन डार्क नेट image. मजे की बात यह है कि the real net which you go and use every day, correct? So that's the most ironic part of things. It's just 4 to 5% of what you see out there in day-to-day lives. So if you look into this picture, so only 4% of the aspects is something which you actually see on the front. आप जितने Google, Bing, Facebook, जो आप openly करते हैं, that is the 5% thing. और अगर आप ये नीचे जाएंगे तो these are your dark web, जो एक्चुअली आपका पीछे से वर्क कर रहा है. एंड ऑब्वियसली मिस्टर टंडन विल आल्सो मेंशन इट, एंड वी कैन क्विकली सी कि कैसे होता है, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ थिंग. एंड अगेन, इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप लोग यूज करें, कुछ करें, बट उसकी वेबसाइट जो कैसे काम होता है, उसमें आपका प्राइवेसी इज एक्सट्रीमली हाई, एंड आई होप इट्स अ गुड एस्पेक्ट कि आप इस बार देख पाए कैसे क्या होता है. बिल्कुल करते. तो वंस यू हैव दिस, there's a website which is called Hidden Wiki. In order to do for those specific darknet, what you need to do is, there's a specific website which has to be downloaded. It's called a Tor browser. तो ये ब्राउजर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. जैसे आप लोग Bing और Google Chrome, Firefox, Opera, ये सब तो आप यूज करते ही हैं, बट डार्कनेट को इस्तेमाल करने के लिए आपका ये Tor ब्राउजर होता है. एंड माइंड इट, इट्स यूएस बेस्ड थिंग, इट्स सिक्योर इन अ वे, बट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. आई ऑलरेडी डाउनलोड, आप लोग इसको सेफगार्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड वंस यू हैव दिस, द डेवलपर पाइथन और सी में क्लियरली लिखा गया है, देयर इज नो हार्म डन इनटू इट.
बट इसके अंदर जो भी वेब पेजेस आपके ओपन होते हैं, those are being done by the help of your specific callers. जैसे आप when you go to normal website, you open up www.google.com, incometax.gov.in, इसी तरीके से आपका .com, .in, ये सारे आपके अलग अलग डोमेन्स होते हैं, बट वहां पे जो आपका चलता है वो है Onion. So I'll just open up browser and also open up the description. So what only thing which is different out here in the you have wiki pages which you open it up, but here you have a wiki pages to open the Tor account. क्योंकि जो आपकी ये Tor websites हैं, those are not being done in the specific. इसको देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका था, तो नॉर्मली आप यूआरएल पढ़ते हैं, आप मैंने आपको बताया कि जैसे ICI.org है आपका वर्क आता है, बट ये देखिए अगर राइट फ्रॉम दी राइट एंड रॉन्ग थिंग्स यहाँ पे अगर क्लियरली अगर आता है, जैसे आपने कोई हैकर इस्तेमाल करना है, आपने कोई ड्रग्स खरीदनी है, ये देखिए आपके जितने आता है, बट ऑब्वियसली बीइंग ऑन द एथिकल साइड ऑफ थिंग्स वी हैव टू बी ऑलवेज सेफगार्ड इन द थिंग्स, यू कैन लुक इनटू दोस एस्पेक्ट्स कि भाई all the things which you look into the aspects is not. And one thing again, kind of dreadful thing which happens there, and that's why one of the reason all the cryptocurrencies are not nowhere being blessed by any of the governments regularly. और आप देखेंगे जिन जिन गवर्नमेंट्स ने उसको ब्लेस भी दिए, ब्लेसिंग इन द सेंस they've approved those countries have a very shady reputations कि भी आपकी कोई साउथ अमेरिका की कंट्री होगी, वेनेजुएला, जो ऑलरेडी काफी इश्यूज फेस कर रही होती हैं फ्रॉम द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम्स और द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम. तो कोई भी डेवलप्ड या इमर्जिंग इकोनॉमी आपको ऐसे नहीं मिलेगी जो पूरी तरह से एज अ गवर्नमेंट एंटिटी क्रिप्टो करेंसीज को पूरी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, अनलेस वो क्रिप्टो करेंसी उन्होंने खुद बनाई और उसका इस्तेमाल करने की बात कर रहे हो. तो यहाँ पे जितने रीजन आई एम सेइंग इज ऑल दी, अगर आपने से कुछ भी लेके चलते हैं, I'll give you one example out here. आपने टेक अ सिंपल वन, तो एक चीज आप जो खास देखेंगे, नो मैटर व्हिच साइट आई ओपन एंड लुक इनटू दिस, सबके लास्ट में अनियन आता है. तो देखिए आपको वेबसाइट का एक तो नाम समझ नहीं आएगा, सब स्क्रैम्बल्ड ये रैंडम नंबर्स आते हैं, और लास्ट में लेकिन जो डोमेन नेम है, दिस इज योर .onion. So kind of onion aspects which you look into those aspects, and I'll just go into one of the sites जहाँ पे I'll go to this rent a hacker kind of thing. So once you click, obviously जब आप इसे क्लिक करेंगे, अनियन वेबसाइट जो आपकी नॉर्मल गूगल है, इन सब पे काम नहीं करती. So with this, I have to control the link and I have to enter the specific software which we have, the Tor, which open onto this. And just click on that.
So see, so once I open this Tor thing, correct? So I have to say connect because basically it's run by various volunteers who keep your identity safe. So I say connect onto this. I place and obviously we'll establish the connection after this. Just give it a minute. So that's where it creates the, when you say it's a dark net, this is the details which happens, and if you have it, not the normal Google Mail जो आपका work करता है indexing में, ये connections और details वो नहीं देख पाएंगे. Obviously, the authorities across the globe now have a complete handle on these softwares in the sense इसको Silk Route और अलग-अलग नाम से लिया जाता है. तो चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी यूएस की हों या इंडिया की भी हों, आपकी जो एजेंसी है वो इनके अंदर जाके मैन्यूवर ओमेट कर सकती है. बट आप मानेंगे काफी हद तक चीजें यहाँ पे सेफगार्डेड एज कंपेयर टू योर नॉर्मल वेबसाइट itself. बट ऑब्वियसली आप किस पर्पस के लिए वो कहते हैं ना कि यू गो टू सर्टेन प्लेसेस, यू गेट ऑल द थिंग्स, बट इट्स अप टू यू एथिकली. आपको पता नहीं कि कैसे डार्क नेट में एक बार बेसिक सेंस होता है और आपने कैसे उसको सेफगार्ड करके चलना है. It's just taking a little bit more time. I don't know why today, but just give it a minute. It will open it once the connection is done. See, like, not allowing me to take a head into hacker right now, but so if you want to, read more about before downloading your Tor's this thing browser and looking at it, you can read about those services which are being provided. This to give an idea, basically, this is the place जहाँ पे आपके finally सारे जितने आपके जैसे हम बात कर रहे थे ना, टंडन सर ने बताया था कि there's an hacking which took place, even the worldwide hacking which took place. I'll be a very concerned person. यूएस में आपको शायद पता होगा 2017 में जितने भी उनके एक्सपीरियंस में सोशल नंबर और एड्रेस और बैंक डिटेल्स थे वो लीक हो गए थे. और वो सारे के सारे आप कहते हैं ना लास्ट में वो सब कहाँ बेचने को आते हैं, सोशल इंजीनियरिंग से किसी का हैकिंग की हो, वो सब आपको डार्क वेब में ही मिलते हैं. और वो रिकॉर्ड कोई $200 $300 प्रति रिकॉर्ड डिपेंडिंग ऑन उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है. दिस इज वेयर इट ऑल लैंड्स अप, एंड ऑब्वियसली पीपल कैन बाय इट यूजिंग योर बिटकॉइन रादर देन पेइंग द मनी इटसेल्फ. एंड द बिटकॉइन ट्रेल इज ऑल्सो बीइंग लेफ्ट आउट. तो तभी बिटकॉइंस और जितने भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको रिस्की माना जाता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे द रेगुलेशन वाइज दे आर नॉट एबल टू कंटेन कि एग्जैक्टली कहाँ और कैसे हो रहा है, एंड बाय द टाइम द डैमेज इज डन सो सिवियरली कि आप उसको कैचअप नहीं कर पाते. तो वंस यू do that part, I'll just open it sometime. I don't know why this thing now.
ये देखिए, once you have this, now you're connected, correct? Onionize. I'll just enter the details जो मैं आपको बताना रहा था. So this is where actually all your data जो हैक हुआ भी होता है, चाहे वो Zomato के दौरान हुआ हो या आपके किसी Air India के बाद हुआ है. This is where it actually stays, and obviously people buy and sell those aspects where the things become your hygiene. तभी कहते हैं कि you have to make sure आपकी hygiene बिल्कुल clear हो, कि this is might it all end up into, and we don't want कि you become that phishing attack या आपका कोई भी detail उसके अंदर वो कराए. Once you have that, you know. So just like a normal browser, but you can just everybody you can see these are not your verbal this thing. These would be all ending with the onion side of things. So when I click on this, it'll open. It'll take some time. Just see. So this is very extremely scary. कि PayPal के accounts, 10 अकाउंट जिनमें कम से कम 250 से 500 डॉलर का बैलेंस है, selling out 150 aspects. So this is what you become end of the day. Bank of America. इसमें कुछ साइट्स ऐसे भी होंगे जब आप अन्य में सर्च करेंगे इंडियन बैंक्स के बारे में शायद डिटेल है, बट ऑब्वियसली विद ऑल द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिसिटी एंड द थिंग रिस्क कम हो जाएगा. आपने जो हमने पिछली भी क्लास में आपने हाइजीन अगर स्ट्रांग रखी है, बट दिस इज द अंडरग्राउंड बेली जहाँ पे सब चीजें लास्ट में बेची जाती हैं. एंड माइंडेड एक हैकर और इसी तरीके से जब रैंसमवेयर अटैक भी होता है तो किसी ने फिशिंग करके हो सकता है आपके एम्प्लॉय से यूजर ने वो पासवर्ड ले लिए हों. हमें पता है पासवर्ड्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग और पावरफुल नहीं बनाए जाते, और उसको लीवरेज करके आपका कहीं ना कहीं डेटा और आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. एंड वंस यू हैव दोस स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग्स, क्लब यू नो विद योर सोशल इंजीनियरिंग एंड लुकिंग इनटू दोस एस्पेक्ट्स, दे ट्राई टू हैक इनटू योर सिस्टम एंड डूइंग दिस रैंसमवेयर अटैक. एंड माइंडेड एक मैलवेयर एक नेटवर्क के अंदर ऑन एन एवरेज 300 से 400 दिन तक वहीं पे वेट करता है. वो किसी भी फिशिंग अटैक के साथ सबसे पहले ओपन होगा. ओपन होने के बाद वो मैलवेयर उस सिस्टम पे सिस्टम एडमिन के अधिकार लेने का प्रयास करता है, और वो करने के लिए वो अपने को कम से कम 4 से 5 महीने का समय देता है. उसके अंदर वो कोशिश करता है, अगर वहाँ एंटीवायरस प्रॉपरली लगा होगा तो वो डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनको, और अगर वहाँ एंटीवायरस नहीं लगा हुआ तो ऑब्वियसली उसके लिए काम करना आसान हो जाता है. तभी आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो नंबर 1 इंडस्ट्री है जिसमें रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं वो है हेल्थ केयर. और वो कोई भी ऐसे छोटे बड़े क्लिनिक वर्ल्ड ओवर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई वनरेबिलिटीज एक साथ चल रही होती हैं. फिर लोगों के फिशिंग अटैक होने आसान होते हैं. आपके वहाँ पे कई बार कितने ही अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं जो खुद विंडोज़ ने या ऑरेकल ने मेंटेन करने बंद कर देते. तो जैसे कैनन का प्रिंटर हो गया, या आपके कुछ मेडिकल डिवाइसेस हो सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आएगा. देयर सो मेनी मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज जो आपके लिए वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. तो वंस योर डेटा इज कॉम्प्रोमाइज ओवर एंड ऑल, और देख रहे हैं आप ये सारी लिंक्स कैसे आपके एम्प्लॉय ने जो सबसे वीकेस्ट लिंक बना, कुछ डिटेल्स बाहर गई, और कैसे वो बाहर जाके कई और चीज़ें सब साथ में मिलती हैं. इट कैन मेक योर लाइफ वेरी ट्रबलसम. So just want to give you in this thing, this is an ethical place. You can have a look just for your own knowledge sake rather than doing anything. It's not recommended to go and give anything, and don't get too excited in those aspects. But just to give a kind of heads up कि भाई कैसे और आपका क्या काम होते हैं. So just to be on a safer side, start using and deploying those things. So coming back to our ransomware aspects, we'll look into this. Once again. Ransomware जैसे कि आपको पहले बताया था, they attack on the availability of the network data, easier to do than exploration of the data itself. कि आप डेटा को ना निकाल के वहीं पे बैठ के उस डेटा को आप एक्सफिल्टर कर पाएं. Using strong encryption to render victim files unreadable. Payments are always and mostly done in cryptocurrencies or bitcoins, and obviously they'll attempt to delete all the host and network. तो वो एग्जाम्पल टंडन जी ने दिया लाइव एग्जाम्पल की एक सीए फर्म में, जहाँ पे उनका 31 मार्च से 3 दिन पहले फ़ोन आया और सारा का सारा यहाँ तक कि बैकअप्स भी आपके इस्तेमाल उसी सिस्टम में थे जो आपका हैक हुआ है. देन यू आर इन अ jeopardy as far as working is concerned. User credentials used for network access and mainly variants and constant evolution. Because these malware are very smart. अगर आपका एंटीवायरस सही टाइम पे
अपने आप को अपडेट नहीं करता, तो क्योंकि अपनी मल्टीपल क्लोन्स कॉपी बना पाता है, तो ऑब्वियसली एंटीवायरस भी अगर आपने सही से अपडेट नहीं किया तो वो तब भी उसमें डिटेक्ट नहीं होता. सो बेसिकली दे आर वेरी स्मार्ट malwares which sit there and work upon it. Things like crypto wall के आपके और आपके काम के वॉल बना देंगे नेटवर्क के, लॉकर, and obviously mostly is done for data. And once again 80% of the ransomware attacks are not even reported. क्योंकि जब एक बड़ी फर्म या मीडियम फर्म के ऊपर अटैक होता है, देखिए आप बड़े बड़े अटैक्स आप न्यूज़पेपर में तब सुनते हैं जब डैमेज हो चुका होता है, या कोई बहुत रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट है या बहुत बड़ा नाम है जैसे एम्स है, तो वो सब आप सुनेंगे. बट एक छोटा मध्यम वर्गीय कोई आपका एक हॉस्पिटल है या मेडिकल चेन है जो टियर 2 में शहर में काम कर रहा है, और अगर उसकी हर चीज़ काम होने से रुक गई है फैक्ट्री, उसमें वो वेट नहीं करेगा कि पुलिस से साइबर क्रिमिनल से मैं वेट करूँ. दे एक्चुअली पे रैंसम्स ऑल्सो सम ऑफ द टाइम एंड गेट इट ऑन दोज एस्पेक्ट्स. तो वहाँ पे भी बोलते हैं अगर कोई छोटी फैक्ट्री जहाँ पे साइबर हाइजीन प्रॉपर नहीं है, फिर डेटा आपका हमेशा बैक, एंड विल लुक इनटू दो स्मॉलर स्टेप्स जिससे कि आप उसको सेफगार्ड कर सकते हैं, एंड लुक इनटू दोस पार्ट्स एंड योर ऑडिटिंग साइड ऑफ थिंग्स. तो once again the specific which comes down to it, यहाँ पे देखिए Xerox डिवाइस एक वेबसाइट अलग थी, और कहीं ना कहीं आपका वो जिप फाइल या जो भी आप अटैच करेंगे जिससे कि आपका रैंसमवेयर आता है, they keep on sitting there and obviously would have access to everything. So malware encrypts everything it can interact with. It takes their own time. और इसको डिफेंस स्ट्रेटजीज भी अगर आप बोलें अपने ऑफिस में कहीं भी करें कि आपके एंटरप्राइज स्पैम फिल्टर्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आपकी फिल्टरिंग कैपेबिलिटी जो स्पैम मेल्स आई ना, और अगर आ भी जाएं तो आपके यूजर्स, जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपके साइबर हाइजीन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ना सिर्फ आपकी बट आपके ऑफिस के सारे मेंबर्स की. ये सबकी इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये आपकी सुरक्षा ज़्यादा है, और जब आप सुरक्षित होंगे तो अपने क्लाइंट्स को भी सुरक्षित रख पाएंगे जो भी सर से काम आएगा. I'll send the ransomware audit list and everything even after this topic, so you can go and do those things. But these things are more important because that's why you have to look into those aspects. आपके यूजर एक्सेस राइट्स आप कैसे देते हैं वो मिनिमाइज कीजिए. हम देखते हैं कितनी जगहों पे जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जो स्टैंडर्ड यूजर नेम पासवर्ड आते हैं प्रिविलेज में या सुपर यूजर पासवर्ड्स, वो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर चेंज ही नहीं करता, वो सब में ओपन होते हैं, तो वो एक रिस्क बन जाता है. और ऑब्वियसली रीज़न यही होता है कि वो मैलवेयर उन्हीं अकाउंट्स को हाईजैक करता है और उसके बाद पूरे सिस्टम पे तभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कंट्रोल लगा पाता है और हर चीज़ इंक्रिप्ट कर पाता है. तो अगर आपने मिनिमाइज किए होंगे यूजर एक्सेस राइट्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिसिटी होगी, तो एक मैलवेयर को भी आसानी नहीं होगी कि वो जाके खुद से हर चीज़ इंक्रिप्ट कर दे. तो ऑब्वियसली कंट्रोल्स बहुत आसान है, बट प्रोवाइडेड आपको पता होने चाहिए कि क्यों और किस लिए कर रहे हैं. बट अगर वही बात है इग्नोरेंस है और हमें नहीं पता, तो कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सिमिलरली करंट ऑपरेशन सिस्टम्स एंड अप टू डेट और पैच सॉफ्टवेयर, जो बताया कि अगर आपने पैचेस नहीं लगाए और वेट करते रहे, जैसे भी थोड़ी देर पहले सवाल आया था कि भाई हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, पैच स्लो नहीं होता, बल्कि आपकी ही सुरक्षा के लिए आप बहुत रेगुलरली इनफैक्ट ऑटोमेटिक अपडेट्स को हमेशा ऑन रखिए. और अगर नहीं भी होता तो हफ्ते में एक बार जाके अपने सारे सिस्टम में खुद से चेक कीजिए कि आपका वर्जन करंट है या नहीं है, क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी कई बार सिर्फ 3-4 दिन के लिए भी अगर ओपन रह गई तो मैलवेयर और फिशिंग अटैक ने उसी दौरान में आपका सबसे ज़्यादा नुकसान कर देना. सो बी वेरी श्योर कि आप अपने हर चीज़ को अप टू डेट और पैच सॉफ्टवेयर रखें, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो और चाहे वो आपका अपना सिस्टम के नेटवर्क क्यों ना हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्किंग बैकअप और रीस्टोर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और जो क्लाउड पे हो. तो भी होता है कि जैसे उस एग्जाम्पल आप देख रहे थे, if you don't keep the backup and restore capability on the cloud basis, और अगर उसी सिस्टम में आप फिर से कहीं ना कहीं फंस गए हैं, तो ऑब्वियसली यू आर इन अ डेड एंड कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिस्टम को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे. एंड ऑब्वियसली अगर आप बैकअप्स कर भी रहे हैं तो उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से ना जाके सर्विस अकाउंट से इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हैक नहीं होते, उनको आप बाद में यूज़ करवा पाएंगे. स्टोरेज लोकेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टिव, रीड ओनली इवन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि अगर रीड ओनली नहीं होगी तो और वो सर्विस अकाउंट होगा तो आप दोबारा लॉगिन करके अपना बैकअप निकाल पाएंगे. बट अगर ये सब नहीं होगा तो वो उसको भी एक्सेस, आपको रैंसमवेयर अटैक एक्सेस नहीं करने देगा. आइडेंटिफाई विच यूजर कुड एनक्रिप्ट बैकअप्स इफ दे वांट टू बिकम इन्फेक्टेड, एंड यू कुड आल्सो रिस्ट्रिक्ट द बैकअप नेटवर्क एक्सेस टेम्परली टू द बैंक वॉल्ट. तो कहना लगा है सेफगार्ड कीजिए अपने सारे के सारे डेटा को. बैकअप स्ट्रांग होना पड़ेगा रैंसमवेयर से बचने के लिए, बट रैंसमवेयर इतनी स्ट्रिक्ट आपकी एस्पेक्ट्स है कि वो कब होगा इट्स सर्टन, करेक्ट. इफ नॉट
if not, it will always surely happen. So यहाँ पे होता था. And one last thing which has to also looked into in the is your password kind of things. अपने hygiene, cyber hygiene की जैसे हम बात कर रहे थे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिसिटी आने के बाद काफी हद तक रिस्क कम हो जाते हैं, बायोमेट्रिक एक्सेस के बाद भी कम हो गए. बट एक आपका जो सॉलिड पासवर्ड है वो भी जितना आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि अपने आप जैसे गूगल के अंदर ही आपका एक पासवर्ड मैनेजर होता है, मेरे जितने भी पासवर्ड हैं वो सब गूगल मैनेजर में ही स्टोर होते हैं. बट बहुत कम लोगों को पता है कि आपके गूगल में ही वही पासवर्ड मैनेजर वेबसाइट के लिए आपको एक नया पासवर्ड भी जनरेट करने को दे सकता है. एंड वंस यू डू दैट, वो पासवर्ड रैंडम कम से कम 10 से 15 करेक्टर का होता है, और उसमें सारे के सारे जो पासवर्ड, अच्छे पासवर्ड के गुण होते हैं वो उसके अंदर होते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट विल स्टोर द पासवर्ड इटसेल्फ, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक पासवर्ड इस्तेमाल जानना है, वो है गूगल मैनेजर पे या पासवर्ड में जाने के. तो वो जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना अच्छा है, ताकि आप वर्क कर पाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम बता रहे थे कि भाई नॉट जस्ट टू बट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपके फोन पे भी मैसेज आए, पुश मैसेज आए आपके फोन मोबाइल फोन पे, वो सारे फैक्टर्स भी आप पासवर्ड को भी रखें. कभी भी इंश्योर कीजिए कि पासवर्ड्स आपके ये क्लाइंट का डेटा जो हम लोगों ने मिला था कि भाई आपके जितने भी उसमें मेंबर्स थे, उनके जैसे हम देखें भी उनमें से हमने लगभग 900 थे आपके पासवर्ड, जिनमें से 800 को हमने क्रैक कर लिए, क्योंकि उसमें या तो सारे लेटर्स थे या सारे नंबर्स थे, या पूरा एक इंग्लिश वर्ड था या फिर वर्ड जिसके बाद नंबर. तो अगर कोई भी डिक्शनरी का वर्ड इसका नंबर 1 2 3 हम ऐड कर देते हैं, वो सब था. और सेम एज यूजर नेम, तो ऐसे भी बड़े महानुभाव थे जिन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था, और ऑब्वियसली जिन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी को मीट नहीं किया था कि भाई आपके अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स हों. तो दीज आर काइंड स्मॉल जेनरिक टूल्स जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ये ऑडिट्स और वर्क आपका इस्तेमाल में लेके जाते हैं. सो वंस यू हैव दीज थिंग्स, जस्ट मेक श्योर कि आप इसको क्लिक करें. इसी में अगर आप देखेंगे कि आपके साइबर सिक्योरिटी की ही अगर आपने ऑडिट को ही लेके चलना है, तो वंस यू गो इनटू योर RDI, CB और सबने फ्रेमवर्क बनाया है. आई विल आल्सो शेयर आफ्टर दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, इसमें वर्क करेगा is from your IRDI. So obviously अगर आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स पे सीधे जाके कभी साइबर ऑडिट या सिक्योरिटी पे वर्क कराना है, तो you can always leverage this wonderful audit checklist जो आपके IRDI के as per latest standards कहने के बने में. It looks into the NIST framework, और obviously जो आपके 4-5 डोमेन क्लियर होते हैं जिसके ऊपर आपका साइबर सिक्योरिटी डिपेंडेंट होता है, आपके आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन, डिटेक्शन मेथोलॉजीज, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं वो टेक्निक्स, और कैसे रिकवर करते हैं. तो साइबर सिक्योरिटी की ये वो 5 पिलर्स हैं, इसके ऊपर सारा कुछ वर्क किया जाता है. और आप देखेंगे कि चेकलिस्ट के अंदर आपको क्लियरली पूरा 1 to 1 आप जब नीचे जाएंगे, ये तो फाइंडिंग्स एरिया है, बट आप नीचे अगर जाएंगे तो आपको क्लियरली कैसे ऑडिट चेकलिस्ट वर्क करनी है, कौन से NIST फ्रेमवर्क से वो डिलीटेड है, वहाँ पे उसका येस और नो है, और कमेंट्स आपको देते हैं. अगर सिक्योरिटी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन हम बात कर रहे हैं, does the organization apply host-based firewalls, port filtering tools and system, and default deny rules to drop all traffic except those ports are being explicitly allowed. तो ये क्लियरली फैक्टर्स आप उसके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठ के समझे भी, येस और नो सवाल आपको जो डिटेल्स मिलेंगे, उसके प्रूफ मांगे, प्रूफ ऑफ टेस्ट ऑफ 1 और टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस. ये सारे फैक्टर्स अगर आप चेकलिस्ट करेंगे तो आपके जितने भी साइबर सिक्योरिटी के बेसिक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने हैं, ना सिर्फ IRDA के लिए, बट इसको आप लीवरेज किसी भी अपने क्लाइंट के लिए भी और अच्छे से कर सकते हैं. और एक काफ़ी अच्छी चेकलिस्ट है जो आप बाद में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और मेक श्योर कि आप इसको अपने क्लाइंट्स को, अपने लिए भी अगर कर पाएँ, तो अगर आपके स्मॉल और मीडियम साइज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब कुछ आपको उसके अंदर क्लियरली करने के लिए देता है. इट्स अ वंडरफुल चेकलिस्ट जिसको आप लीवरेज कर सकते हैं. आई विल सेंड इट आउट आल्सो विद योर थिंग्स. This I'll take a pause. Any questions, Charmi, or anything for me? Yes, sir. Any questions for me from the? Yes, sir. We have many questions coming up. Yep. So, first question is that I which is fake and spam. Sorry, fake and? Spam.
करेक्ट. सो स्पैमवेयर आपका जितना भी वर्क करता है, देखें आपके जैसे गूगल के अंदर ही ऑलरेडी इनबिल्ड आपकी फिल्टरिंग होती है. तो या तो आप किसी चीज को खुद, एक मिनट, तो जीमेल में एक बाय डिफॉल्ट एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डला हुआ है जो आपके मेल अटैचमेंट्स को रिव्यू करता है. तो ये भी सेफ गार्डेड. अगर उसको कभी भी कोई डॉइसी लगेगा तो या तो अपने आप ही स्पैम फोल्डर में डाल देता है या वो नहीं करने देता. बट जैसे कि पहले भी मिस्टर टंडन ने बताया, जीमेल करते हैं तो उसमें काफी हद तक आपको सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं. बट एक अच्छा एंटीवायरस होना अपने में बड़ा क्रूशियल हो जाता है आपके वर्किंग के लिए. तो लेट मी ओपन दिस और आपको दिखाऊंगा स्पैम मेल्स के अंदर आप कुछ भी वर्क करेंगे ना. So let us say, I received this one and obviously I don't want this to come into the aspect. अब मेल अगर कोई खोलते भी हैं, when you open the email and inspect, आपको लगता है कि आपके relevant नहीं है, so make sure as a good hygiene also, आप गूगल में जब भी काम करते हैं तो आप 2 जीमेल अकाउंट प्लीज बनाइए. एक बनाइए जो ब्राउजिंग के लिए, कि अगर आपने ऐसे थर्ड पार्टी को देना भी है, इट्स गुड प्रैक्टिस के वर्क करें. बट आप देखेंगे हमेशा इसके अंदर ही फैक्टर आपका आता है कि भाई आपके ऑप्शन है रिपोर्ट स्पैम, और इसी में देखिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन भी आता है रिपोर्ट फिशिंग. अगर आपको लगता है कि जैसे perfume.com दिस इज द काइंड ऑफ राइट वन जो मैं इस्तेमाल या मुझे चाहिए, वो कहाँ पे आपको वेबसाइट पे लेके जा रहा है, आप जब भी इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, तो आपको बता देगा कि आपको कहाँ लेके जा रहा है. जस्ट हियर, तो देखिए ये आपको डोमेन नेम बता रहा है, उसके बाद वो आपको कुकीज के थ्रू बता रहा है कि कहाँ लेके जाएगा. स्टिल ऑन द राइट साइड. बट अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप खुद उस वेबसाइट पे जाके, अगर को आपको कुछ भी करने के लिए, देन यू लुक इनटू दोस एस्पेक्ट. और अगर आपको लगता है नहीं, यू वांट टू स्पैम इट एंड आपको लगता है फिशिंग अटैक ही है, सो यू कैन ऑलवेज इवन अनसब्सक्राइब. क्योंकि हर स्पैम, देखिए स्पैम इज जस्ट लाइक सेलिंग डिटेल्स टू यू. वो स्पैमर्स जब आपके सिस्टम में मैन इन द मिडल बन रहा होता है, तो वो आपको उसको पता है कि मुझे हर बार perfume.com से डिटेल आता है, तो वो कोशिश करेगा इसी का रेप्लिका बनाएगा और मुझे गलत वेबसाइट पर ले जाने की कोशिश करेगा. तो आपको हो सकता है उस समय आपको ध्यान से देना है, चाहे वो सेम ही जगह से हो, और आप या तो उसको स्पैम रिपोर्ट कर दीजिए या रिपोर्ट फिशिंग कर दीजिए. वो अपने आप गूगल विल टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स. Okay, sir. So, next question is, do this Tor browser respond slowly or as good as Google as far as speed is concerned? It's a very slow and it's a different kind of thing. देखिए मैं आपको recommend नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा जाइए उसमें. It's a very slow thing. आपकी जो भी आप उसमें एक्सेस कर रहे हैं वो सब हमेशा के हमेशा आपका सिक्योर होगा. आप किसी को नहीं पता होगा क्या किया है, कैसे किया है, अपार्ट फ्रॉम दी हाईएस्ट एपिटोम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो आपको ट्रैक कर रहे हैं और स्कैन कर रहे हैं. सो इट्स स्लो एंड इट्स काइंड ऑफ नॉट. और आपके वो वेबसाइट के नाम वहाँ से रेलिवेंट नहीं है कि incometax.com.gov.in. आपने देखा हर चीज .onion से खत्म हो रही है और उसके बाद ही आप काम कर पाते हैं. स्लो, और वो सारी सारी वेबसाइट्स आर काइंड ऑफ फिशी इन अ वे. नॉट रेकमेंड टू गो देयर अ लॉट, बट आप एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में जो डार्क नेट कहते हैं कि कैसे आपकी कोई डिटेल जानकारी नहीं मिली, आप कहाँ पे क्या एक्सेस कर रहे हैं. डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज डेफिनेटली ग्रे टू डार्क एरिया जिसमें आप जाने की कोशिश करें. आप वैसे कुछ सिलेक्ट ढूंढना चाहते हैं, वो थोड़ा व्हाइट और ग्रेश एरिया में आ सकता है, बट डोंट गो डीप इनटू दैट. बट आप डेफिनेटली उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं. बट वो गूगल और बाकी ब्राउजर्स के साथ बिल्कुल नहीं है. Okay, sir. The next question is, why do some passwords do not work even after they are confirmed? देखिए उसके मोस्ट लाइकली चांसेस ये हो सकते हैं, या तो आपका सिस्टम कहीं ना कहीं हैक या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्योंकि वो ऐसे ही मैसेज बाद में देता है कि अगर आपका पासवर्ड सेट होने के बाद आपका दोबारा नहीं चला, इट गिव्स यू काइंड ऑफ ऑप्शन. ऐसा कभी भी नहीं होगा. अगर आपने एक बार सेट कर दिया, सही यूआरएल पे जाके किया है, तो आपका पासवर्ड हमेशा दोबारा से अपडेट होकर वर्क करना चाहिए. अगर नहीं कर रहा, इट इज एक्चुअली वेरी फिशी, और ऐसा नहीं होना चाहिए. I request anyone, if anyone have more questions for sir, please post it in the question box so we can have it and do it. So right now we only have this much questions for you. If someone wants to post their question, I'll it. also give my email ID and my phone number. So
if you have any questions even afterward, always feel free to ask me. I'll send this, as I told you, I'll send the audit program, which is from the IRDA itself, and also the presentation which I shared, along with other tools and tricks. In fact, Anderson, with that, I'll also make a quick copy of it and send it out. Taki, let me operate in a PowerPoint. Sorry. I'll take it from. So I think, sir, there's no questions also coming up. We want to take any session, or we can wind up the session? I think we can wind it up. I'll send all these details, technical, more technical. You can write it to me if you want more technical programs on what we have discussed, ransomware. I can send you depending on your needs. But I'll send the common one ताकि आप लोग उसको इस्तेमाल कर पाएं और leverage कर पाएं along with the details. I think that should be out of it today. True, sir. True, sir. Thank you so much, sir, for such a wonderful and practical session that you have given. Your knowledge would be very relevant for each and every person around. And as these days we use everything on digital platform and everything, without internet, we are like a handicapped person. And to safeguard our internet, we should know certain basics that you have shown us today. So we all participants are really very acknowledged and have a gratitude towards you that you have shown us the right path to use our internet very perfectly and in safety, with safety. Correct. No. Once again, I'll thanks the DAP committee, Amit ji, Nanda ji, and yourself, Charmi, for giving me this opportunity. And I'm always there for the members if they have to ask and take care of anything. It's always a privilege to help and guide them. And yeah, as rightly said, Tandon sir ne bilkul sahi bol diya tha कि we have to be absolutely on top of our cyber hygiene. That's most crucial. गाड़ी चलाइए, रस्तों में खतरे होते हैं, बट आप गाड़ी चलाने से मत घबराइए. यूज योर लीवरेज और द साइबर नॉलेज. आप खुद भी सेफ रहिए और अपने क्लाइंट्स को भी सेफ रखिए. वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस वैल्यू एडिशन सर्विसेज को. तो डेफिनेटली promulgate also. And obviously किसी ने सवाल पूछना कुछ करना, I'm always there to answer those questions. Thank you. True, sir. True. Very well said. So with this, we come to the end of this wonderful journey of cybersecurity. As all beautiful things come to an end, we conclude this session with the promise on behalf of the committee that the committee, starting from chairman sir to secretariats and all other people connected to make this program a success, that we all will strive best to disseminate knowledge and in the best possible way. So today we sign off from this session to come back to you next time with new vigor and spirit. Thank you so much.